ಪಿಚ್ಚಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಿಚ್ಚಿನ ಓಲ್ ಅಂತ వచ్చి ಪಿಚ್ ಇರ್ದು ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ ಪಿಚ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಉಂಡಿಗೆ So I request both the captains to stay back for the toss. Other players can walk down they can walk down, but I request both the captains to stay back for the toss. All the players who have signed, they can leave the commentator box, but the two captains, I request them to stay back for the toss. The second semi-finals, the penultimate match of the tournament will be played between NM cricketers and Mangalore cricketers. NM cricketers, one of the strong favourites to win this match. Mangalore cricketers, what a match it was against young friends. They won the match of the very last ball. And that was wonderful bowling there by Nikhil. Nikhil was the one who bowled that last over. A tremendous bowling performance by Nikhil enabled them to win that match against young friends. I request the skipper of Mangalore cricketers to report here immediately for the toss. We are running out of time. Two matches to be played. So I request the skipper of Mangalore cricketers to report here immediately for the toss. Your opponent is waiting for you. Toss won by Mangalore cricketers, and they decided to bat first. Maybe after winning the quarterfinals against young friends, that might have prompted them. They were able to defend a total of 36 runs for victory, and they won that match by 1 run. And that might have prompted them to bat first. NM cricketers as well as Mangalore cricketers are going to clash in the second semi-finals. This particular match, the second semi-finals, has all the ingredients of the finals. One thing for sure. The two umpires officiating this match are Suresh as well as Roland Pinto. They are making their way towards the middle, and you can see NM cricketers out there in a huddle right in front of the pavilion, maybe for a small prayer before dispersing to onto the field.
So Mangalore wicketkeepers after winning the toss. Electing to bat first. The two openers making their way towards the middle. One of them wearing that 05 number jersey and another one wearing that 44 number jersey out there. They are making their way towards the middle, and still we can see the players of NM cricketers are in a huddle. Maybe for a small prayer out there just before dispersing to their fielding positions. So second semi-final is the penultimate match of the tournament, organized by Nutan friends Urwa in memory of late Austin Montero. So NM cricketers, they lost the toss. Mangalore cricketers won the toss. They elected to bat first. Surprisingly, it hasn't been the trend when it comes to shorter version of the match. Mangalore cricketers winning their previous match, that was the quarterfinals against young friends. They defended a total of 36 runs, and that might have prompted them to bat first. They have that belief in defending the total rather than chasing down the total. The bowler to bowl from the pavilion end. Mujib, the skipper of the side. He's the skipper of the side. He's bowling. The two openers out there at the far at the striker's end. Tagraj, heavily built. And at the non-striker's end, Nikhil, the left-hander. He was the one. What a over it was, the last over. He was able to defend. In last over, I don't know how many runs he had to defend. 5 runs he had to defend in the last over, and managed to defend those 5 runs. Superb bowling performance it was by Nikhil. And the last delivery, he was able to completely deceive Ashwin. And Ashwin was run out. Cricket is a game of glorious uncertainty, and that was proven in the quarterfinals, which was played between Young Friends and Mangalore cricketers, and Mangalore cricketers emerged victorious, and now they are in the semi-finals. Tagraj is the batsman. Mangalore winning the toss, opting to bat first. The first delivery of the match of the second semi-finals. Raz doesn't get hold of it properly. Bottom bench. Good piece of work by the fielder behind the wicket keeper. Had to move across to his right hand side. Bend low down. Managed to field that ball with his right hand. Managed to throw it in one action, but not before the batsman were able to cross over for a single. With that, they opened their account. 1 for the loss of no wicket. One for the loss of no wicket. Mujib, the skipper of the side, he has to lead from the front. Right arm over the wicket, wide of the crease, delivers, drives at us, doesn't get hold of it properly. It was really a blessing in disguise. Nikhil was the batsman, going for a drive. It wasn't for the meat of the bat, and ball landing just inside the 20-yard circle at short wideish mid-on region. The fielder was outside the 20-yard circle, and ball landing safely out there, just inside, 5 yards inside the 20-yard circle. 2 for the loss of no wicket. Mujib once again, wide of the crease, delivers, drives it, again for falling shot, misfielding by the fielder, resulting into a chance of run out. All is happening in favour of Mangalore cricketers. Dive it, the wicket keeper out there dived, but wasn't able to get to that ball. Slight fumble there.
If there was no fumble out there and the fielder was able to field that ball cleanly, Tyagraj, one of the batsmen, would have been back in the pavilion, one thing for sure. 3 for the loss of no wicket. Tyagraj is at the non-striker's end. It was really a narrow escape there for Tyagraj. 3 for the loss of no wicket. Mujib is a sort of a bowler who can just cramp the batsman for room. Is bowling at a very good pace, decent pace, delivers the ball all on the surface. Look at the way, oh, this time around the bowler down on the ground. Slipped, lost his footing. It was a fair delivery, but unfortunately, he was down on the ground. 4 for the loss of no wicket. Mujib, the skipper of the side, that was a very good delivery, delivered all along the surface, bending low down. He lost his footing and he was down on the ground. He landed on his back over the ground, just in front of the popping crease at the non-striker's end, to be precise. 4 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket. Second semi-finals of the tournament. Both the teams are playing for that Nutan Champions Trophy 2022. Right arm over the wicket. Wide of the crease. Delivers. Drives it beautifully down to the deep mid-off region. There's a fielder out there. In comes the throw at the non-striker's end. 1 run cruise. The score moves on to 5 for the loss of no wicket. Nikhil on strike. Left and right in combination out there. The bowler has to keep on changing the line, if not the length. And drives it. Doesn't get out of it properly. This managed to set up for the single. Driving it. End of the over. 6 runs on the board. 1 over has been bowled. So Mujib was the one who had bowled the very first over. The skipper of the side. And them cricketers, they are the strong favourites. One of the strong favourites. Mangalore cricketers. There can be the surprise package. Here it is at Urwa Cricket Grounds. What a match it was against the young friends. Mangalore managed to come from behind and win that match. So 6 for the loss of no wicket. Nikhil, the batsman, the left-hander on strike. Nikhil, who plays for Kuttar Friends, one of the few technically sound batsmen in underarm cricket. But here he has to score of virtually each and every delivery. He can't afford to just treat the ball according to the merit. They have to look out for runs. This is the shorter format of the match, shorter format of the game, to be precise. 6 for the loss of no wicket. Left arm is the bowler. Riaz, the bowler, bowling round the wicket to the left-hander, trying to angle the ball and to the right-hander. Right arm over round the wicket. Nikhil is the one. Riaz is the bowler. Nikhil is the batsman. Still, I don't know why they are trying to waste time between the overs. Already we are behind the scheduled start of this match. Right arm round the wicket. Moving towards us, passes umpire, round the wicket, drives across the line in place, down to the mid-wicket region. The fielder from mid-on to move across to his left-hand side, go round the ball to wicket his right hand, and the batsman cross off for a single. 7 for the loss of 1 wicket. 8497. Tyagraj is the batsman, right-hander. Now the bowler has to change the line when Tyagraj, the right-hander, is batting out there, and the bowler immediately switching over the wicket. From round the wicket to the right-hander is bowling, changing his guard, bowling over the wicket. Right arm over the wicket. Bouncing the ball 3, 4, 5 times. Look at him. Still right arm over the wicket. It doesn't get hold of paper. Just past the wicket keeper. Oh my goodness, gets a fielder behind the wicket keeper. Try to bend down and pick that ball. Unintentionally kicking the ball towards the point region. Just what happens. 8 for the loss of no wicket. He was trying to bend down and pick that ball, and his foot coming on the way, and unintentionally just kicking the ball.
8 for the loss of no wicket. Right arm round the wicket. To bowl to Nikhil. Nikhil again try to work it on the onside. Nikhil looking back. There's no need for Nikhil. Wide signal by umpire. There's no need for Nikhil to look back over the shoulder. He had to just look at his partner. It should be a partner's call. Anything played behind the stumps or behind squares of the wicket on either side, it should be the non-striker's call. Non-striker will be in a very good position to see where the ball exactly had gone. And the striker has to just respond positively. Left arm round, right arm round the wicket. Delivers to the left hander. Nikhil trying to charge down the pitch and going for a try on that occasion. Lucky for him, his back foot was safely planted. He was comprehensively beaten. That delivery was outside the off stump. And Nikhil just tried to go for the drive, leaning forward. And unfortunately for Nikhil, his back foot was safely planted behind the crease. 10 for the loss of no wicket. No wickets. 9. It is 9, not 10. 9 for the loss of no wicket. This is the second semi-finals. It has all the ingredients of the finals. The two top teams are battling against each other. The winners of this team are going to clash against NFC Urwa. And NFC Urwa, they are in the finals. They're beating Nutan cricket as the host. The right arm round the wicket to bowl to Nikhil. Nikhil leaning over his bat, settling into his stance, waits. Goes for a try, doesn't get rolled up it far, but beautiful, that was played beautifully, ball swinging towards the boundary, right in front of square on the onside, good piece of work by the fielder, he had to pull the ball back into play, that you go for third run, chance of run out, the throw wasn't good enough, it should have been over the stumps, flat over the stumps, and that was good effort there by the fielder, he had to cover about 15 or 20 yards to his left hand side, he was down on the ground, managed to pull the ball back into play, and before he could retrieve the ball on the second attempt, the batsmen were able to cross over for 3 runs, 12 for the loss of no wicket. Superb running between the wickets, and the fielder out there should have thrown the ball flat over the stumps at the non-striker's end, and one thing for sure, Nikhil would have been back into the pavilion. "12 for the loss of no wicket." Second over is going on. The power play is on. 2 overs of power play. Immediately after the 2 overs, the field restrictions will be lifted, and the skipper of the fielding side can put 5 fielders outside the 20-yard circle. You can spread out the field. Right arm over the wicket. Riaz to tag Raj. Raj, it doesn't get rolled away, biting it down to the short third man range, and again some fumble there. Wasn't able to pick that ball cleanly. So 1 run across. The score moves on to 13 for the loss of no wicket. Mangalore cricket is up to winning the toss, opting to bat first. It's not so easy out there under the artificial lights, the fed lights. It doesn't look as bright as it does in the daylight or natural light. Again, trying to play across the line, has been cleaned up. Trying to play across the line, charging down the pitch, trying to play across the line, completely beaten, wasn't able to pick the right line, picking the wrong line, trying to play across, and you can see Nikhil back into the pavilion. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. The new batsman making his way towards the middle, wearing the 06 number jersey. Rizwan. The Rizwan is making his way to join Tagraj. Nikhil was the batsman trying to play across, but it wasn't so easy for him. He has to be very careful when you play the cross shot to a delivery which is heading towards the stumps. You have to be very, very perfect. Cross but is shot to a delivery which was heading towards the stumps. He was just slightly, down the pitch, slightly, he had left the crease when he tried to play that ball. You could see him and try to hit it across the line. You have only half the face of the bat at your disposal. The face of the bat is 4.25. So that's the reason why, that's a disadvantage when you play that cross-batted shot. You have to pick the line and length of the ball to perfection early and execute it to
perfection or to nicety. Atif the bowler from the pavilion end to bowl to Thagraj. Mangal the wicketers winning the toss and opting to bat first. Under five lights, it's always good to bat first and put a safe score on the board. 13 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Atif the bowler from the commentator box end. Moving away from us, past umpire, balls, beautifully ball curling across the face of the bat, and just he could have seen that ball going down the leg side. Superbly bowled, change of pace. It wasn't a faster delivery, one thing for sure, and batsman was completely deceived. 13 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket, slowly walks to the top of his bowling mark. NM cricketers, after losing the toss, they were asked to bat field first. Right arm over the wicket, Thagraj leaning over his bat, waiting and waiting. Therefore, Atif goes for a drive to a delivery outside the off stump. Was beaten, collected by wicketkeeper. Immediately comes the wicketkeeper breaking the stump, and you can see the off stump was down on the ground. 13 for the loss of 1 wicket. Uprooting the off stump on that occasion. 13 for the loss of 1 wicket. Third over is going on. The skipper of the fielding side has the liberty of spreading out the field. So NM cricketers, they have a good bowling attack, and that's the reason why. Beautifully bowled. Again, it was a superb piece of bowling, curling in from outside the off stump, and the batsman wasn't able to pick that ball. By signal by umpire. Superb piece of bowling. Even though it was bowled at a very slow pace, curling across. So 14 for the loss of 1 wicket. It was delivered all along the surface, curling across from just outside the off stump. If it was pitched somewhere and curled away from the 5th or 6th stump, the ball would have headed towards the stumps, and it was going down the leg side. 14 for the loss of 1 wicket. Again he bowls, beautifully bowled. This time around, that was the delivery. Yorkerland delivery. Batsman works it on the onside, down to the vacant area at a short, almost to the left of the square leg umpire. The fielder from a short wideish mid-on had to run across to his right hand side. It was played down to that vacant short mid-wicket region on the edge of the 20-yard circle. There's no fielder out there. 15 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Delivers. Far outside the off stump. Wide signal by umpire. This is not the way to bowl. Wide signal by umpire. That was far outside the off stump. No way the batsman was able to reach for that ball. 16 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Leaning over his bat, settling into his stance. Thagraj is the batsman. He has got that upright stance. Look at him. He doesn't bend low down. Tapping his bat onto that crease. Across the line he plays. There's the fielder almost in line with the popping crease on the onside. Down there at deep square leg region. He had to run forward, slightly forward to his right hand side behind square. And the batsman managed to cross off for a single. 17 for the loss of 1 wicket. Third over is going on. Right arm over the wicket. Atif the bowler. Rizwan the batsman. Atif bowls. Rizwan pushing it just past the bowler. Is almost trying to go for that acrobatic stop. Going down to his left hand side, wasn't able to stop that ball. 1 run across. 3 overs have been bowled. That's going at the rate of 6 runs per over. 18 for the loss of 1 wicket. 3 more overs to be bowled, and over to Firoz for further description on the match to take it through to the end of the innings of Mangalore cricketers. This being the second semi-finals, and we hope so. It has got all the ingredients of the finals. शुक्रिया मिस्टर लीनर्स। टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी टॉस जीतने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए मंगल देवी, त्यागराज और रिजवा ने कमाल संभाली। वहां पर 3 ओवर के बाद 18 रन 6 के अवसर से वहां पर 1 विकेट जरूर खोया उन्होंने।
रियाज तैयार अपने कोटा के सेकंड ओवर डालने के लिए, कुल मिलाकर चौथी ओवर के साथ वहां पर 9 स्ट्राइक रेट से RM एसोसिएट्स की तरफ से गेंद करेंगे। उनके सामने बल्लेबाज है निखिल, दोनों बल्लेबाज त्यागराज और निखिल के लिए 3-3 रिजवान और त्यागराज। अच्छी गेंद अंदर आती गेंद क्रॉस से वहां के दिशा में खेला दिया, बॉलर स्वयं जाकर उसको गैदर कर पाए, लेकिन इस बीच एक रन का मौका था बैट्समैन के खाते में से, एक रन साथ ही उनका निजी स्कोर गया वहां पर 3 और कुल मिलाकर 19 स्कोर वो पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब आए वहां पर त्यागराज, 9 गेंद का सामना किया, 6 पर खेल रहे त्यागराज, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट रन अप है वहां पर रियाज त्यागराज के लिए। त्यागराज क्रॉस द शॉट खेलना चाहते थे, शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद गई जा रहे हैं वहां पर, 1 रन का इजाफा, इसके साथ ही उनका निजी स्कोर गया वहां पर 7 और कुल मिलाकर टीम का स्कोर गया 20 रन। इस टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल यहां पर NM मैंगलोर और श्री मंगल देवी क्रिकेटर्स के बीच में। मंगल देवी ने इस मैच में टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करते हुए रिसीव करने के प्रयास वहां पर कंप्लीटली बीट हुए, रन लेने चाहते थे, आखिर पर इरादा बदलते अपने घर पर सुरक्षित रन बनने का कोई गुंजाइश नहीं, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि चल रही चौथी ओवर, गेंदबाज है वहां पर रियाज एक बार फिर अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए रिजवान के लिए 4 गेंद का सामने करते हुए 3 पर खेल रहे रिजवान, 9 पर जो कर रहे हैं, 7 पर खेल रहे हैं त्यागराज, 10 गेंद का उन्होंने सामने किया है। रियाज बैकफुट जाकर ड्राइव कर दिया, ड्राइव के साथ ही निकल दिया, नमस्ते रन पर अगर सही होता तो खतरा जरूर होता था, लेकिन इस बीच बच गए वहां पर, 1 रन रिस्की सिंगल कर सकते हैं, इस 1 रन साथ ही कुल स्कोर गया वहां पर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे से वहां पर शुरुआत श्री मंगल देवी क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों की तरफ से। रियाज अच्छी गेंद को जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को टाल दिया है। 1 रन उनके खाते में, इस 1 रन साथ ही कुल स्कोर हो गया 22 रन और त्यागराज खेल रहे 8 पर, रिजवान 4 पर, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 22 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रिजवान तैयार गेंद करने के लिए, एक बार फिर अंपायर को क्रॉस करते हुए, एक बार फिर अच्छी गेंद अंदर आती गेंद सीधा मिड ऑफ टिक पर, क्लीन बॉल होकर वापस आ रहे बल्ले की दिशा में। रिजवान आउट होकर वापस बल्ले की दिशा में, इसके साथ ही वहां पर एक और विकेट गिरा है श्री मंगल देवी क्रिकेटर्स का और आउट होने बैट्समैन है रिजवान। दूसरी विकेट के रूप में रिजवान वापस बॉलिंग की दिशा में, जबकि स्कोर है सिर्फ 22 रन। जो देर से है उनकी मैं बता दूं कि इस मैच में श्री मंगल देवी क्रिकेटर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल NM मैंगलोर और श्री मंगल देवी क्रिकेटर्स के बीच में। नए बैट्समैन जा रहे हैं वहां पर रफीक क्रीज पर मौजूद, त्यागराज का साथ देने के लिए, त्यागराज जो कि खेल रहे 8 पर 11 गेंद का सामना करते हुए। सो 4 ओवर हो चुका है, 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं आतिफ, अपने स्पेल की दूसरी ओवर, यानी कुल मिलाकर 5 ओवर डालने के लिए 2 और बचे इस इनिंग्स में। 22 रन को वापस सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर श्री मंगल देव क्रिकेटर्स ने अब तक बनाया वहां पर। ये इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल NM मैंगलोर और श्री मंगल देवी क्रिकेटर्स के बीच में UCG में उर्वा क्रिकेट ग्राउंड में अंडर लाइट्स।
और आतिफ तैयार गेंद करने के लिए त्यागराज को। सर्कल पर ऑफसाइड पर सिर्फ 2 खिलाड़ियों को लिया गया है और एक ऑनसाइड पर शॉर्ट फाइन लेग। इस बीच आफ्टी के बाहर दी गेंद काफी नीचे रही गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन अधिक खाते में वाइड के जरिए 23 रन स्कोर पर। रन धीरे धीरे बढ़ता हुआ डीप स्क्वायर लेग। लॉन्ग ऑन को हटाकर सर्कल के अंदर लिया गया। लेफ्टी बैट्समैन है रफीक। रफीक तैयार स्ट्राइक लेने के लिए। रिजवान रफीक को स्वीप करने का प्रयास, लेकिन इस गेंद डॉट गेंद था। इस मौके पर डॉट गेंद जरूरी है एनएम के लिए। हर गेंद पर फील्डिंग में परिवर्तन की कोशिश। एक बार फिर तैयार वहां पर आतिफ और ये गेंद लेफ्टी को चोटती जरूर जा रही थी। गेंद एक बार फिर हवा में घुमा दिया था बल्ले को। गेंद काफी नीचे रही। रन बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं दिया बल्लेबाजों को। रन में कोई तब्दीली नहीं है। स्कोर अभी भी 24 रन। 24 2 विकेट के नुकसान पर। आतिफ तैयार उनके सामने है वहां पर रफीक। अब तक अपना खाता खोलने में असफल है वहां पर रफीक। अंपायर क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से एक गेंद रिसीव करना चाहते थे और सीधा विकेट पर। और इसके साथ ही वहां पर रफीक आउट होकर वापस आ रहे पहले की दिशा में। 2 more to go। 2 गेंद और बचे इस ओवर में। रफीक आउट होकर वापस आ रहे पहले की दिशा में। इस तरह से वहां पर तीसरा विकेट गिरा है श्री मंगलदेव क्रिकेटर्स का। एनएम मैंगलोर के खिलाफ खेलते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल में 24 रन बना चुके हैं अब तक 3 विकेट के नुकसान पर। दामोदर नया बैट्समैन आए हैं वहां पर क्रीज पर और नौश पर खड़े वहां पर त्यागराज। 12 गेंद का सामना करते हुए त्यागराज 8 रन का योगदान अब तक दे चुके हैं वहां पर। दामोदर तैयार स्ट्राइक लेने के लिए अंपायर से फर्स्ट गाइड लेते हुए बैटिंग के लिए। इस मैच के लिए अंपायर का कार्य निभाते हुए सुरेश मूडबिद्री और स्क्वायर लेग पर खड़े हैं वहां पर रोलैंड पिंटो। आतिफ तैयार नए बल्लेबाज दामोदर को सीधा सिप करना चाहते थे। एक बार फिर बीट हुए वहां पर रन लेना चाहते थे। लगातार डॉट पे डॉट गेंद वहां पर डाल रहे हैं आतिफ। 3 लगातार डॉट गेंद। चौबीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 ऑन द बोर्ड फॉर 3 विकेट। दूसरे सेमीफाइनल एनएम मैंगलोर और श्री मंगलदेवी क्रिकेटर्स के बीच में नूतन ट्रॉफी 2022 की इस टूर्नामेंट में दूसरा सेमीफाइनल यहाँ पे एक गेंद आफ्टे के बाहर उसको उठा दिया है। गेंद मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड कर पर स्ट्राइक रन पर थ्रो कर पाई 1 रन लेने का मौका था। इसे एक साथ ही कुल स्कोर हो गया वहां पर 25। आतिफ ने 2 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट लिया है। उनका स्पेल खत्म हो चुका है। अब बचा है सिर्फ आखिरी ओवर। 5 ओवर हो चुका है। 5 ओवर के समाप्त स्कोर है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। औसत चल रहा है 5 रन प्रति ओवर। 2 मैंगलोर के सबसे बढ़िया टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए यहां पर खेल रहे हैं। एनएम मैंगलोर और श्री मंगलदेवी क्रिकेटर्स
मंगलदेवी ने टॉस मंगलदेवी क्रिकेटर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अब तक 25 रन बने हैं। सिर्फ 3 विकेट उन्होंने खोया है। 5 ओवर हो चुका है। आखिरी ओवर बचा है इस इनिंग्स का। देखना पड़ेगा आखिरी ओवर में कितना रन बटोरते हैं या कितना एक बढ़िया लक्ष्य वहां पर ओपोनेंट टीम के लिए रखते हैं, देखने वाली बात है। यहां पर इस बीच रिलवान अभी के बाडन माफ कीजिए रिलवान आए वहां पर गेंद करने के लिए। उनके सामने बल्लेबाज दामोदर। आखिरी ओवर इस इनिंग्स का। रिलवान के हाथ में गेंद। 25 रन को पर 3 विकेट खोकर श्री मंगलदेवी क्रिकेटर्स इंडिया के खिलाफ खेलते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल में ये गेंद को उठा दिया जो जरूरत थी वो, और लेकिन फील्डर जो लॉन्ग ऑन पर खड़े थे उनको हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा उनके हाथ में कैच। गेंद हवा में ज्यादा थी, बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं कर पाए, सीधा हाथ में देकर गेंद वापस पेलने की दिशा में आ रहे वहां पर दामोदर। उसके साथ ही वहां पर चौथा विकेट गिरा है श्री मंगलदेवी क्रिकेटर्स का। 25 रन को पर अवसर चल रहा है 5 प्रति ओवर। 5 गेंद और भी बचे हैं इस इनिंग्स में। अब आए नए बैट्समैन यतिराज आए वहां पर त्यागराज का साथ देने के लिए। त्यागराज जो कि काफी अरसे से खेल रहे हैं, 12 गेंद का सामना किया। इस बीच एक बार फिर स्ट्राइक लेने के लिए वहां पर यतिराज इस गेंद को एक बार फिर सीधा खेल दिया विकेट के ऊपर से। वहां की गेंद जा रही है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की दिशा पे, लेकिन इस बीच वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन आसानी के साथ बैट्समैन के खाते में। इस 1 रन के साथ ही कुल स्कोर हो गया वहां पर 26 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ ओनली 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच उसको ड्राइव कर दिया पर मिड ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद। रन्स आ रहे हैं लेकिन धीमा आ रहे हैं। स्लॉग ओवर में अभी आखिरी ओवर चल रहा है, वहां पर कुछ बढ़िया शॉट देखने को नहीं मिल रही है। टॉस जीतने के बाद में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया है श्री मंगलदेवी क्रिकेटर्स ने, लेकिन धीमा शुरुआत उनका और आखिरी वक्त तक सिर्फ विकेट की बात की जाए तो सिर्फ 4 विकेट उन्होंने खोया है। 6 खिलाड़ी उनके पास और भी बचे, लेकिन कुछ बढ़िया शॉट अभी तक स्लॉग ओवर में देखने को नहीं मिली है। तलाश जारी है। इस बीच उठाना चाहते हैं और ये गेंद सीमा रेखे के बाहर 4 रन। जिसकी बात चल रही थी, लॉन्ग ऑन पर खड़े थे फील्डर, थोड़ी सी वाइड थी शॉट। इसके साथ ही चौके की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया 31 पर। काफी हद तक एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचा दिया टीम का स्कोर को 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दो गेंद बचे इस इनिंग्स में और भी। त्यागराज 14 गेंद का सामना करते हैं, 13 पर खेल रहे। ये गेंद और एक बार फिर उठा दिया वहां पर सीधा फील्डर के हाथ में। उसी फील्डर को थोड़ी सी वाइड लिया गया था वहां पर। देखा कि पिछला गेंद में त्यागराज ने उधर ही शॉट मारा था और उसी जगह को फील्डर को थोड़ी सी वाइडिश और सीधा फील्डर के हाथ में इस बीच आउट होकर वापस आ रहे पिटने की दिशा में। लेकिन कोशिश जारी थी त्यागराज के लगातार 2 गेंद में चौका मारने के, लेकिन इस बीच चूक गए। सीधा कैच फील्डर के हाथ में देकर वापस बॉलिंग की दिशा में। 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी आखिरी गेंद इस इनिंग्स का। नए बैट्समैन है वहां पर महेश। एक और यतिराज वहां पर खड़े हैं, एक गेंद का सामना करते हुए 1 रन पर, और महेश को मौका। आखिरी गेंद महेश के लिए। रिलवान 2 ओवर फेंके, 6 रन दिया है।
6 रन अब तक दे चुके रिलवान। आखिरी गेंद आने के लिए इस गेंद को ड्राइव कर दिया, ड्राइव के साथ यहाँ पर निकल रन के लिए रिलवान स्वयं जाकर उसको फील्ड कर पाए और जो जरूरत नहीं था उसको, लेकिन इस बीच आउट। लेग बाय का इशारा इस बीच आ चुका है अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा मिल सकता है लेग बाय के जरिए अतिरिक्त खाते में। कुल मिलाकर स्कोर हो गया वहां पर 32 रन। 32 दे मेड इन द लिमिटेड 6 ओवर, 32 for the loss of 6 wicket. That means 32 they made. That means 33 is a target. 33 is a target to enter to grand finale. फाइनल में प्रवेश करने के लिए 33 रन का लक्ष्य रखा है एनएम मैंगलोर के लिए श्री मंगल देवी क्रिकेटर्स। टॉस जीतने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन अपनी 6 ओवर की खोटा में 33 रन का लक्ष्य इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2022 इन मेमोरी ऑफ लेट ऑस्टिन मंटेरो। सो इस बीच जब तक एनएम का इनिंग्स प्रारंभ हो, मैं माइक्रोफोन में बुलाना चाहता हूं मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में शमीर मलार। For in this prestigious cricket tournament. Yes, we are heading to the chase of in this second semi-final match. The captain himself starting the bowling attack of Sri Mangal Devi cricketers. 32 is the target in 36 ball. The two very good opening pair, Asif Addur and Tawfiq Murshidde, as the opening pair for in Mangalore. Yes, we get the green signal. Suresh Mudbidri and his partner is none other than Roland Pinto sir. Rafiq behind the stump, Damodar at short fine leg, Quresh at short cover. The point, Mahesh at mid-off, Tagaraj batted very well. He was there till the end of the innings, but the explosive batting, what most of the cricket lover expected from him, that did not come. Only 1-4 he scored, that penultimate ball he faced. Nevertheless, 31 runs scored and 32 is the target to win this match. So wait and see what might be the action coming in next 6 over. We'll explain everything. 33 is the target, he beg pardon. 32 runs they scored. And here's the first delivery from left arm quick bowler over the wicket to right-handed batsman Asif Addur. Oh, what a shot and what a start! That ball almost hit the boundary cushion in the pull, and umpire lifted his 6 finger sky level it means, and what a brilliant shot! First delivery, not an easy shot to apply, but look at the confidence level of that man Asif Addur. Still umpires want to confirm it that, and they are satisfied with that decision. 6 signal from the umpire, and what a brilliant start here for NM Mangalore. We seen in IPL Glenn Maxwell of Royal Challengers Bengaluru, and here Asif Addur with the brilliant start.
Once again, second time he tried to play that similar kind of stroke, but this occasion he bowled a little slower delivery. And if you look at the replay in that Bedra Media, how well he connect that shot. Never easy when bowler bowling along with the carpet and playing that kind of stroke, but he's a master of playing that shot, Asif Adur. That give lots of confidence. Now look at the sound when ball meet the bat. They gone for the single. There is a risky single actually. If Tyagaraj connect properly and hit the throw, there could have been Asif some sort of trouble. But anyhow, he moves on to 7. Total goes 7 on the board without losing any wicket. Wonderful start here for NM Mangalore. Courtesy of brilliant batting. Look at that. How well he played that shot. That was the flattest version. Brilliant batting, absolutely brilliant batting from Asif Adur. Oh, it might be a spectra wide outside off stump. The exercise for the umpire. One extra added 8 on the board in no time. In fact, just 3 ball faced. They already scored 8 runs, including 1 wide and 7 runs from the bat of Asif Adur. Tawfiq also just opened his account with that shot into the mid-on, where Tyagaraj collected the ball. They moves on to 9 already in the board. When they were chasing the 33 run, they got a very good start here for NM Mangalore. Courtesy a brilliant start. He played 1 good innings in this season, that JD Boys Trophy against KFC Kodikal in that semi-final match. One of the match of the season, I can say, in that JD Boys Bantwal Trophy semi-final match against KFC Kodikal. What a brilliant innings Asif Adur played, including 3-6. There's a very difficult shot to attempt, but look at the confidence level, how well he played that pick shot. Brilliant batting. Score already moves on to 11 on the board. So final ball from Kiran. Once again try to go for the reverse hit. Missed the line completely, waiting for the umpire signal. Look like there is nothing. Yes, by signal from the umpire. 1 more extra added, extra number 2. So end of the over number 1. 12. Without losing any wicket. What a brilliant start for NM Mangalore. Now just 21 run required of 30 ball. NFC Urwa already reached the final of in this prestigious Nutan Friends Urwa presents Nutan Trophy 2022. We are waiting one more finalist. Can NM Mangalore, can Mangala Devi cricketers? Still Mangal, they have the opportunity. They need a couple of tight over and wickets. They can come back. But so far, NM Mangalore, they are in the driving seat. In the first over completed, they are already scored 12 run. Just 21 run required of remaining 30 ball. So Jasim Munna brought into the attack from the Rohan Montera and Rahul Montera end. RM Associates that from that end. He'll be bowling to right-handed batsman Asif Adur. Oh, look at that shot he played into the backward square leg boundary for 4. What a brilliant batting. The slog sweep at his best from Asif. He's just making the mockery of the opposition attack with the brilliant batting. Look at that. There's a 2-fielder and the square leg umpire in the middle. And he made a sandwich between the 2-fielder into that square leg boundary, deep square leg boundary for 4. What a brilliant batting. Big shout, big shout. Definitely missing the off stump. Leg by signal from the umpire. He's in a hurry to finish the match. Whenever Asif in a form, he is a treat to watch. Asif Adur, what a champion cricketer, one of the decent cricketers ever produced from Adur. And the main pillar of NM Mangalore batting lineup this time, outside edge of the bat, into the short third man, one-handed pick-up throw, Damodar. With the brilliant fielding, Damodar. But they could not able to stop the batsman to take in the single score. Now moves on to 18 on the board after the completion of 1.3. 4 time is bowling mark. Munna to Asif. Can he go for the big shot?
Once again, tap into that. That's the catch practice for the fielder. He's in a hurry to finish the match. Ball hit the top edge of the bat. Fielder at the short mid wicket collected the catch, completed the catch. In fact, wicket number 1 of Mangalore back to the pavilion. Good atmosphere here under floodlight, cold breeze. The players really enjoyed because they had really humidity high in the morning, the cloudy day. But now very good to play the cricket here in this prestigious Urwa cricket ground. The UCG, the known as the cricket Kashi of Underarm cricket. Munna with the breakthrough. Still 2 more delivery remaining. Score already 18 on the board. Just 15 more required to win this match. Another distractive batsman in Underarm cricket, Sajid Mulur Patna, into the middle at number 3 for Mangalore. He came as opening batsman in the first match. This time back to the ball drive. Munna hit him brilliantly. Chadha run out at the striker's end. But they completed. So 1 run have been completed. The score now moves at 19 on the board. So definitely Mangalore in the driving seat, but still cricket always glorious, uncertain, anything can possible in that way. They need to think. The wicketkeeper behind the stump, wide signal from the umpire. He wanted to distract the umpire with that appeal, but the umpire said there's no contact with the bat and ball, and he signaled as a white ball. Roland Pinto, the man have more than 37-year experience as umpire. It is the final ball of the power play. Tawfiq joined the party. One bounce into the mid-wicket boundary for 4. They reach the 24 run in no time after the completion of the power play. 24 for the loss of 1 wicket. Now just 9 run required of remaining 24 balls. Look at the body language of Sri Mangaldev cricketer, totally changed because of this distractive batting from the both openers. When Asif at the crease, Tawfiq was cool and calm. Once lose the wicket of Asif, he is the one taken the responsibility of the charge. And he was matching really well for that kind of stroke. What a brilliant shot. So 24 on the board, just 9 runs required to win this match. Change of bowling. Sumit. Sumit from the pavilion end. Just 9 runs required to win this match. Can Mangalore finish in style in this over? Just push the ball in the air for some time. Mahesh with the brilliant catch. Just check his drive actually. Almost flighted delivery. Invited the batsman to go in for the drive. Half-hearted push, I can say. Not a full committed shot. He's a tall man, Sajid. He could have been cleared that boundary, but it just check his shot. And Mahesh at deep cover. Didn't make any mistake. He got a bucket-like hand. Wicket number 2 of Mangalore back to the pavilion. Joining batsman, the young, exciting all-rounder of Mangalore, Riaz Murshedde, into the crease. 2 players played for French Murshedde, Tawfiq and Riyad. They have understanding each other very well. Last year, Murshedde Trophy, we seen these 2 pair opening the batting for Mangalore because their home ground. That's why they promoted Riaz as opening batsman along with Tawfiq in that Murshedde Trophy. Now here is normal position at number 4, Riaz. Oh, that's almost into the pad. Luckily some bat involved there, otherwise there could have been possible chance of getting the wicket of Tawfiq.
At short fine leg where Damodar catches the ball, batsman had enough time to take in the single. In the single score now more than 25 on the board. Just 8 runs required to win this match of remaining 22 balls. Oh, that's unnecessary. He wanted to match up with Asif Adur with that kind of stroke, and he tried to go for the switch it in very fast delivery. There's a big gap between the bat and pad. Ball sneak between the both legs and hit the one of the stump there. Riaz, yes, there's a pin front of the middle stump. In fact, the ball hit the middle stump actually. Riaz walking back to the pavilion. That kind of stroke no necessary at all. Being experienced man, he could have been take the single because they are chasing less than a run a ball here. Singles can do the job for NM Mangalore, but they are in a hurry to finish the match in a style. That's why he tried to go for that switch it, missed the line completely, and ball did the rest of the job, hitting the one of the stump, in fact the middle stump, wicket number so, and here is so here is once again, no, that turned too much. Just inside the frame line. So last one ball remaining. Excellent overs from Sumit so far. Just consider only 1 run. And picked up 2 wickets, 2 valuable wickets actually. Excellent over completed by Sumit. Look at the figure to read. 1 over, no maiden, 1 run and picked up 2 wickets. Brilliant bowling. So now 8 runs required of remaining 18 ball before going to start of the 4th over. Once again, I invite Sujit to the commentary box for the further explanation in state and sweet language Kannada. Welcome Sujit for the commentary box. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮೀರ್ ಅವರೇ. 25 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 8 ಓಟ ಮಾತ್ರ. 8 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಂಡ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಊಹೆಯನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. NFC ಉರ್ವ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ದಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 33 ಸವಾಲಿನೊಂದಿಗೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ 4 ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26, 3 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 27, 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಈ ಬಾರಿ
ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 28. ಇನ್ನು 5 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 14 ಎಸೆತಗಳಿಂದ. 14 ಬಾಲ್ 5 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಲದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೌಫೀಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ತೌಫಿಕ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫಿಕ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ 29ಕ್ಕೆ 4. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29, 4 ಉದ್ದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೇವಲ 4. 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ನವದಾಂಡಿಗನಾಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತೀಫ್ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. NM ಜಪ್ಪು ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅಂಡರಮ್ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಆತೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ತೌಫಿಕ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಿಖಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಆತಿಫ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30. ಇನ್ನು 3 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಸವಾಲು. 12 ಬಾಲ್ 3. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ NM ಜಪ್ಪು is on driver seat. 12 3. ಎಸ್ಗಾರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3, ಅದೇ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸುಮಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬೈಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದರೂ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸಿದರೂ ಕೂಡ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 11 ಎಸೆತಗಳಂತೆ. 11 ಬಾಲ್ 2 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಿತ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡೆದಿರು, 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ NM ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದೇ. 10 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2. 5 ಉದ್ದರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಆತಿಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಮುಜೀಬ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಮುಜೀಬ್. ನೋಡಿ ಆತಿಫ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಜೀಬ್ ಬರುವಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ 9 ಮುಂದೆ ಬೇಕು, 2 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಜೀಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನ, ಸ್ವಯಂ ಕಪ್ತಾನನೇ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಣದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲ್ಗೆ ತೆಗೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಿಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಮುಜೀಬ್ ಸಮಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 32. ಐದನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. ಇನ್ನೂ 1 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಕಪ್ತಾನ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮುಜೀಬ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್. 6 ಮುಂದೆ 1. 6 ಬಾಲ್ 1 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದ ಹೋರಾಟ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಮುಜೀಬ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವುದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ತಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋಧ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್, ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮುಜೀಬ್ರವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ NFC ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, captain of NFC Urwa and captain of NM Jappu, please report your photos for a final match. Which team is the finals and enter the champions of this tournament? ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ನಾಯಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So I request skipper of NFC, please report to the committee box for the toss. So once again I request the bowling skipper, NFC, skipper of NFC, please report to the committee box for the toss. NFC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So NM on the toss, they elected to field first. So match will going to start within a few minutes now. The final of
Nutan Champion Trophy 2022. NFC versus NM.
Sixer, every 6 rupees, every 6 rupees, 600, sponsored by Roshan Fernandez, and every 4 rupees, 500 rupees, 500 by Kenneth D'Souza from Dubai. Same copy, go beside. So the finals of the Nutan Champions Trophy played here between NM Cricketers and NFC Urwa. NM Cricketers winning the toss and opting to field first. So the two openers making their way towards the middle. Both the umpires are out there. Ryan Pinto just standing there with his back towards the stumps at the near end, facing towards the pavilion, with his hands folded behind his back. And now he's turning around, still his hands folded behind his back. So all is set for the very last match, the ultimate match of the tournament to be played here at UCG Urwa Cricket Grounds. Both the teams are playing for that Nutan Champions Trophy 2022. Every 6 rupees 600 sponsored by Roshan Fernandez, and every 4 rupees 500 sponsored by Kenneth D'Souza from Dubai. And anyone who hits on the full that banner carrying late Austin Montero's picture will get rupees 1,000 rupees. Rupees 1,000, beg your pardon, is going to be richer by rupees 1,000 if the ball is that banner on the full. You can see that banner out there at the RM Associates end. And that prize, almost that prize is sponsored by none other than his eldest son, Rohan Montero. Banner at the far end, at the Madatkani end, to be precise, carrying the picture of late Austin Montero. If any batsman hits the ball on the full, is going to receive rupees 1,000. Sponsored by none other than his elder son, Rohan Montero. And every 6 rupees 600 sponsored by Roshan Fernandez, and every 4 rupees 500 sponsored by Kenneth D'Souza from Dubai. All is set for the very first ball to be bowled, and the bowler is none other than Mujib, the skipper of the side, to bowl to Tilak. Tilak is the striker, and at the non-striker it is Prajwal. All is set for the very first ball of the finals. Without getting the feel of the wicket, was trying to play that ball across the line, going for the sweep shot to a delivery that was heading towards the stumps, and ball sticking under the bottom edge of the bat onto the stump. The first wicket down at the very first ball of the finals. This is not the way to bat. At least he should have got the feel of the wicket and get the measure of the pitch. All of a sudden, that delivery was bowled all along the surface. Superb piece of bowling, wicket to wicket, and that really yielding result in favor of the bowler. One wicket down, no runs on the board. What a start there for NM Cricketers, with the nose in front, tail up. Now the next batsman in is Sandeep. Mujir is a sort of a bowler who can bowl those deliveries all along the surface at express pace. It's not so easy for the batsman to place either square of the wicket on or off side.
or straight down the ground. It camps the batsman for home. Right arm over the wicket. From the pavilion end. Delivers. Drives it. Doesn't get hold of it properly. Wanting a single. He didn't know where the ball had gone. There was no response by the non-striker. It should be the call of the non-striker. Non-striker wasn't interested. Sandeep, after playing that ball, it had gone past her. Maybe the ball might have caught the outside edge of the bat. It had gone past the wicket keeper. Immediately was heading for the single without looking where the ball had gone. Right arm over the wicket. Mujib the bowler. Wide of the crease. Delivers. Sweeps the ball. Doesn't get hold of it properly. It's not so easy. Mujib is sort of a bowler. He can bowl wicket to wicket at express pace. He was beaten by the pace of the delivery. Cramping the batsman for home. It's not so easy to hit the ball on either side. Square the wicket. Or behind square the wicket. Or straight down the ground when Mujib is bowling. He's bowling wicket to wicket. And you have to play with the horizontal bat. It's not easy for you to play with a straight bat. If you're going to play with a straight bat, it's not going to fetch you any runs. Say, this is what happens. Mujib is bowling at a very good pace. The batsman was beaten by that pace. Mujib, the skipper of the side, leading from the front. Right arm over the wicket. NM cricketers, they are the strong favourites. NFC, Urwa, they have made it to the finals. NFC, after they lost the toss, they were asked to bat first by the opponents. NM cricketers. Right arm over the wicket. Delivers. Again going for a swift shot to a delivery and it's been cleaned up. I don't understand what the batsman was doing on the for NM cricketers. And it is a skipper leading from the front. It's not so easy to reverse shift the ball to a delivery which is heading towards the stump, and ball is bowling at a very good pace all along the surface. It's not so easy. If the ball is bowled outside the off stump, you can go for the shot. You are going to have that width, the latitude to play the reverse shape. You can just give the ball the direction towards a fine deep third man region, just past the wicket keeper. And it's not so easy when the fast bowler is bowling. He's bowling at express pace, one thing for sure. And you have to get into the position before the ball is bowled. It's not so easy. After the ball is bowled, it's too late for the batsman to play the reverse sweep. Easily he may get cramped for home. Right arm over the wicket, delivers. Drives it upstream but safe. Oh, this affair. So a bad bounce there for fielder at short cover region. They go for one, that's all they're going to get. 1 run on the board, the very first run on the board. 2 wickets down. End of the over. End of him. Very good over. Outstanding over. Economical over. 2 wickets and 1 run was given and conceded in that particular over. 1 for the loss of 2 wickets. What a start it has been for NM cricketers. A dream start. And it was given to them by none other than their skipper, Mujib. What? Two wickets out. 2 wickets for 1 run. First. So far, in this particular match, he has taken 2 wickets, conceding only 1 run. Versus Sri Mangalore cricketers, he was able to get 1 over. He had bowled, he had given away 6 runs. Against Sneha Malimar, he was able to get 1 wicket, conceding 3 wickets, beg your pardon, conceding 8 runs. And against KFC Kodikal, he was able to contain the batsman. He had given away 9 runs. That was really expensive as far as his bowling figure is concerned. That was against KFC cricketers. 1 for the loss of 2 wickets. Mujib, the skipper of the side, leading from the front, setting an example. Works it, tries to work it on the onside. We have to wait behind square on the onside. The fielder out there, the back of square leg region. Beg your pardon, it's short square, bit square, right, short fine leg region, charging towards the ball, dropping his hand by his feet, right hand by his feet to stop the ball, throwing it at the non-striker's end, and the batsman cross off for a single. The score moves on to 2 for the loss of 2 wickets. And these 2 batsmen have to revive the situation for the side. They have to rebuild the innings, repeat the innings, and they need a partnership of at least 15 to 20 runs if they have to just bounce back in this finals. This being the finals, NFC cricketers, they have got a very young side. Promising youngsters are out there. Have been fielded there by NFC Urwa cricketers. Right arm over the wicket, delivers. Off the shot, and by 6. Superb shot. Getting underneath the ball and lofted it over the long on boundary for a maximum. Fetching rupees 600, sponsored by Roshan Fernandez.
beautifully played, picking the line and length to perfection, getting underneath it, up and over she goes, ball hitting the lower part of the meat of the bat and clearing the deep mid-on boundary for a maximum, and is issued by rupees 600, sponsored by Roshan Fernandez. 8 for the loss of 2 wickets. Superb shot there by Prajwal. Ranjit is at the non-striker's end. Riaz the bowler, right arm over the wicket, delivers. Prajwal draws it down to the mid-off down to the boundary. 4 ball, superb shot. The fielder at widest mid-on region, he wasn't able to, almost wasn't able to get across to his left-hand side to stop the line. And fetching rupees 500, sponsored by Kenneth D'Souza from Dubai. So far, 1,000 rupees so far has been a beautifully played. Beautiful, but that's before runs. 4 more. 1,600 rupees he has been able to fetch so far. What is 3 boundaries in a row. Superb shot. First one was the 6. Another one straight down the ground on the onside. 1 bounce into the fence. And the third one heading down the was able to play across the line down to the deep mid-wicket boundary for 4 runs. Fetching fetching rupees 1,500. 1,600. 600 rupees for the 6 and 500 each for 2 boundaries. Superb shot. 16 for the loss of 2 wickets. Every 4 of rupees 500. For every 4 rupees 500 sponsored by Kenneth D'Souza from Dubai, and for every 6 rupees 600 sponsored by Roshan Fernandez. Superb batting display there by Prajwal, and what a shot it was. 16 for the loss of 2 wickets. The need to rebuild the innings for the side after the fall of 2 quick wickets out there in the very first over. Right arm over the wicket. Riaz the bowler. Bowls to Prajwal. Prajwal trying to play across the line. Setting over second touch around a fumble there by the fielder behind the wicket keeper. Otherwise he would have easily picked the ball underarm onto the stumps. He wasn't able to do so. Easily could have underarm onto the stumps if he had picked the ball cleanly. Bending low down. Sajid was the fielder. Sajid was the fielder out there. Easily could have got the batsman run out. Prajwal is richer by rupees 1,600. 1 6 and 2 fours. $17 for the loss of 2 wickets. Again trying to play across the line. Ball ricocheting off the legs with the field batsman on the target, and wicketkeeper had to scramble because by signal by umpire ricocheting off the legs of the wicketkeeper on the occasion. That's the reason why it was being given by 18 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. That was really an expensive over. 8 run. 10, 14, 15 runs were scored of that particular over. This again, Roshan Fernandez is from Dubai, Kenneth D'Souza is from Dubai. Both of them are sponsoring this prize for every 6 and every 4. Roshan Fernandez from Dubai is sponsoring for every 6. And Kenneth D'Souza from Dubai is sponsoring for every 4. For every 6, you are going to get rupees 600, and for every 4, rupees 500. We are grateful and thankful for their generosity. Both Roshan Fernandez as well as Kenneth D'Souza, they are watching this match live from Dubai. 18 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Delivers the 3rd over. The need to score at least 45 plus runs. It's not so easy. And them cricketers, they have got a very good bowling lineup. One of the best bowling lineups in the history of underarm cricket. When it comes to shorter version of the match,
I'm not talking about a longer format of the match or longer format of the game. When it comes to 6 overs or 7 overs, under 10 overs, NM cricketers, they have the best side. They have the effective bowling attack when it comes to shorter version of the match. But when it comes to longer version of the match, we have seen them, they are not so effective. One thing for sure. 19 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Delivers. Every 6 rupees 600. Every 4 rupees 400. So far, Prajwal. 500, beg your pardon. Every 4 rupees 500. Prajwal so far has been able to fetch rupees 1,600. Right arm over the wicket. Goes for the reverse sweep. Doesn't get hold of it properly. To a delivery which was slightly going down the leg side. It's not so easy. He has to just see where the line of the ball. If he's somewhere on the 4th or 5th stump outside the off stump, you can go for the reverse sweep. Give the ball the direction towards the third man region. But the bowler is bowling at a very good pace. It's not so easy. When you play you may easily get beaten by the pace. Across the line. He's trying to play. It's been cleaned up. Across the line without moving his feet, swinging his bat like a baseball batter and paying the penalty, and batsman is back into the pavilion after scoring after scoring 14 runs. 14 runs, so you can say, laced with 2 boundaries, 2 fours and 1 6. So 14 runs he has scored, Prajwal, and the new batsman making his way towards the middle is wearing the 17 number jersey. I will let you know the name of the batsman, number 3 batsman. Ajay. Ajay is the batsman, slowly walking towards the far end, the striker's end. Atif the bowler. So NM cricketers, they have got a very good bowling attack. That's the reason why, after winning the toss, immediately they decided to field first. Prajwal managed to fetch rupees 1,600. They scored 14 runs, laced with 2 fours and 1 6. Going for the sweep shot. Going for the sweep shot. I don't understand what the batsman was doing on that occasion. What he was doing on that occasion. Another batsman bites the dust. What he was trying to do was trying to sweep that ball from outside the off stump. Ball might have taken the inside edge of the bat and he might have had dragged it onto the stumps. Soft dismissal. I feel very sorry for the batsman. Trying to play that highly unorthodox shot and paying the penalty. 19 for the loss of 4 wickets. Wickets are tumbling here, except for those aggressive strikes there by Prajwal. And the rest of the batsmen haven't been able to negotiate the bowling of NM cricketers. Atif the bowler. What a start they had, NM cricketers. They managed to get 2 wickets of the very first over. Third over, second over was very expensive. 15 runs were scored of the second over. And now the third over, Atif is really making amends for that poor bowling in the second over. Rusty bowling in the second over, Atif bowling in the third over, trying to make amends for it. 19 for the loss of 4 wickets. Atif is a sort of a bowler. He bowls to slow deliveries. Now that was at full toss. Batsman trying to work it. I don't know where to wait and see. That was a bye. Ricocheting, full toss delivery, ricocheting of the hand and of the wicket keeper. Down to in line with popping crease on the one side for a single. 20 for the loss of 4 wickets. NM cricketers, after winning the toss, opting to field first. So far, the bowlers have been able to justify the skipper's decision of fielding first, except for that 3 boundaries there by Prajwal. Superb batting display it was. Just plays it down to the deep mid-wicket region for a single. 1 run across. The score moves on to 21 for the loss of 4 wickets. Every 6 rupees 600, sponsored by Roshan Fernandez from Dubai. He's from Dubai. And every 4 rupees 500, sponsored by Kenneth D'Souza from Dubai. And if the ball hits that banner straight down the ground far end, Madaragani end, where
There's a banner out there carrying the picture of late Austin Montero, in memory of whom this tournament is being conducted. The batsman is going to get rupees 1,000. The ball has to land on the full, on to that banner. And that prize is sponsored by none other than his eldest son, Rowan Montero. 3 overs have been bowled, 21 for the loss of 4 wickets. And Kabir Kudroi is the one who is going to take over the commentary for the next 3 overs. धन्यवाद इस वक्त लीलन सर के लिए। और इस वक्त 4 रन बाउंड्री के साथ यहाँ पर आगमन आते हुए इस बल्लेबाज रंजीत की तरफ से, और चौके के साथ रन से यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 25 क्वार्टर सेंचुरी हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर 25 रन बनते हुए बल्लेबाजी टीम अब इस नूतन फ्रेंड्स प्रस्तुत करते हुए नूतन चैंपियंस ट्रॉफी 2022 यहाँ पर चलते हुए एक मेगा श्रृंखला इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फाइनल का मुकाबला आते हुए ग्रैंड फिनाले इज गोइंग ऑन हियर। टॉस जीतने के बाद यहाँ पर क्षेत्ररक्षण करने के लिए निर्णय यहाँ पर ले चुकी थी अन्नम ने। अब इस वक्त 3 ओवर समाप्त करने के बाद रन संख्या वहाँ पर आ चुकी थी केवल 21। अब पहला गेंद पर चौके रन आने के बाद इस बार और थ्रो किया था गेंद, वहां पर रन आउट शायद हो सकता था, डायरेक्ट हिट किया था नॉन स्ट्राइकर इनकी निशा पर, लेकिन 1+1 यहाँ पर होते हुए इन 2 रन यहाँ पर अतिरिक्त की तरफ से यहाँ पर मिल चुका है। इन 2 रन के साथ रन आगे बढ़कर 27 इस अबाउट इस वक्त आगे बढ़ाते हुए स्कोर कार्ड पर। अब अंपायरिंग का कार्यभार इस वक्त निभाते हुए रोलान पिंटो सर और विवेक सर इस वक्त अपने कार्यभार निभाते हुए, मैच रेफरी सुरेश मुडाबिद्री सर और मेरे साथी कमेंटेटर लीलन सर और समीर मलार, फिरोज और सुजीत फिर से तैयार। रियाज गेंदबाजी पर अपनी दूसरी गेंद, इस बार गेंद को वहां पर केवल दिशा दिया था, ऑफसाइड की निशा पर गेंद जाते हुए 30 की सर्कल के अंदर वहां पर गेंद जा चुकी थी। फील्डर ने वहां पर क्षेत्ररक्षण करने के बाद कलेक्ट किया और गेंद को वहां पर कुछ हद तक विकेट कीपर के हाथों पर जा चुकी थी और इसी के साथ 1 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। इस 1 रन के साथ रन से आगे बढ़कर 28 ऑन द बोर्ड। इस बार अगेंस्ट ऑन साइड की निशा पर जाते हुए वहां पर आई थिंक दैट इज आउट, रन आउट यहाँ पर होते हुए स्ट्राइकर की निशा पर जो बल्लेबाजी नॉन स्ट्राइक पर थे वो धीमी गति के साथ वहां पर दौड़कर आ चुके थे स्ट्राइकर की निशा पर, लेकिन डायरेक्ट हिट करने के बाद वहां पर रन आउट हो चुका है। इस रन आउट के साथ 5th विकेट हैज बीन फॉलिंग डाउन, 5वीं विकेट यहाँ पर गिर चुका है। अब 3 गेंद समाप्त करने के बाद रन से यहाँ पर रुकते हुए केवल 28 पर 5 विकेट यहाँ पर गिर चुका है। दर्शक अब खामोशी के साथ अब 11:05 यहाँ पर होते हुए लाइव टेलीकास्ट टीम पर सलमान इरफान जी की सारथी के साथ इस वक्त बेद्रा मीडिया लाइव यहाँ पर होते हुए फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए अब मिड ऑफ को अंदर और डीप मिड विकेट को वहां पर बाहर रख चुका है, लॉन्ग ऑन का बाहर और डीप एक्स्ट्रा को यहाँ पर बाहर रख चुका है। डीप थर्ड मैन को बाहर रखने के बाद गेंदबाजी पर फिर से तैयार राइट और द विकेट इस वक्त गेंदबाज करते हुए रियाज गेंदबाजी पर। रियाज इस बार गेंद को रख चुका था लेकिन वहां पर बैरा पटक रहा है, डायरेक्ट हिट हुआ था, शायद वहां पर रनआउट की खतरा हो सकता था और लेकिन थ्रो वहां पर वाइडी से थ्रो होने के बाद गेंद स्टंप्स की बहुत ही किनारा यहाँ पर जा चुकी थी, वहां पर 1 रन दौड़कर प्राप्त कर चुका है। लेग बाइस का इशारा पर यहाँ पर देते हुए अब स्कोर कार्ड जंप होते हुए 29 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स।
रियाज पांचवी बार, इस बार गेंद अलॉन्ग द कारपेट, जिसे अंग्रेज में कहते हैं, बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुके थे, एब्सोल्युटली परफेक्ट गेंदबाज यहाँ पर दिखा देते हुए रियाज। और इसी के साथ डॉटेड गेंद यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बिंदी गेंद के साथ पांचवी गेंद यहाँ पर मुक्ताई हो चुका है। अब आखिरी बार रियाज राइट और द विकेट गाड़ लेते हुए इस बार गेंद को उछालने की जल्दबाजी थी, लेकिन गेंद ऑन साइड के काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड करार यहाँ पर देते हुए इन वाइड के साथ रन्स यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब केवल आखिरी एक गेंद शेष है रियाज की इस कोटा पर, अपनी दूसरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। रियाज राइट और द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को ड्राइव करने के लिए कोशिश किया था, स्ट्रोक करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन बल्लेबाज चुके और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद वहां पर ओवर समाप्त कर चुका है। इस ओवर के साथ रन्स आगे बढ़कर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 4 ओवर समाप्त करने के बाद 30 रन यहाँ पर होते हुए 5 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 ओवर स्कोर इज मूविंग ऑन 30 ऑन द बॉर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब बचे हुए 2 ओवर अभी बाकी है फर्स्ट इनिंग्स खत्म होने के लिए, पहला इनिंग्स खत्म होने के लिए अब केवल 12 गेंद बाकी है। देखना पड़ेगा कि इन दोनों बल्लेबाज अपने किस योजना के साथ अपने खड़ी संघर्ष के लिए एक खड़ी स्कोर वहां पर जरूर करनी चाहिए। आतिफ गेंदबाज करते हुए इस वक्त अपने कोटा की दूसरी ओवर की पहला गेंद, इस बार स्लोअर वन गेंद थी, लेकिन गेंद ऑन साइड की निशान पर जाते हुए अंपायर का इशारा वाइड करार देते हुए और वाइड के साथ यहाँ पर रन्स एक्स्ट्रा की तरफ से यहाँ पर मिलते हुए 31 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 ओवर। 4 ओवर समाप्त करने के बाद 31 रन यहाँ पर बनते हुए अब पहला गेंद आतिफ फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार ड्राइव किया था गेंद को, लेकिन वहां पर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर थे, वहां पर आगे के और गेंद को कलेक्ट किया था जरूर, लेकिन वहां पर थ्रो नहीं किया और इसी के साथ 1 रन आसानी से पूरा कर चुका है। इस 1 रन के साथ रन से यहां पर आगे बढ़ाते 32 ऑन दी बोर्ड। अब दूसरी गेंद यहां पर तैयार गेंदबाजी पर आतिफ गेंदबाज करते हुए रंजीत इज ऑन स्ट्राइक। इस बार गेंद थोड़ी सी परिवर्तन के तौर पर धीमी गति की गेंद थी, लेकिन अब इस वक्त स्लोअर वन गेंद यहाँ पर डालने के बाद बल्लेबाज पूरी तरीके चुके और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और इसी वक्त डॉटेड गेंद यहाँ पर साबित होते हुए बिंदी गेंद यहाँ पर साबित हो रहे हैं और इसी के साथ 2 गेंद यहाँ पर समाप्त हो चुका है। रन यहाँ पर होते हुए 32 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। गेंदबाजी पर फिर से आतिफ अपनी दूसरी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार रिवर्सिप खेलना चाहा, लेकिन वहां पर योजना के अनुसार वो रिवर्सिप खेलने की वजह आतिफ ने कई लेग साइड पर यहाँ पर गेंदबाज करते हुए ऑन साइड के निशान पर गेंद को वहां पर कर चुके थे और इसी के साथ वहां पर डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहाँ पर साबित हो चुका है। इन डॉटेड गेंद के साथ कंटिन्यूसली बैक टू बैक यहाँ पर बिंदी गेंद इस वक्त साबित हो रहा है। इस बार गेंद यो मैसेड हिट यहाँ पर बाउंड आउट होते हुए और रंजीत की बारी शायद खत्म यहाँ पर होते हुए गेंद ऐसा लग रहा था कि आखिरी मौके पर गेंद ऑफ स्टंप्स को काफी दूर लगेगा, लेकिन अंतिम ओवर पर अंदर की ओर आने के बाद यहाँ पर बेल्स यहाँ पर आउट हो चुका है। बेल्स ऑफ होने के बाद 6 विकेट यहाँ पर गिर चुका है। केवल 32 रन पर अब देखना पड़ेगा कि इनकी जगह बनने के लिए नए खिलाड़ी कौन आ जाएगा। अपनी रणनीति को यहाँ पर एक खड़ी संघर्ष खड़ी रन यहाँ पर रखनी चाहिए, क्योंकि विरुद्ध पक्ष विरुद्ध टीम पर एक भला बैटिंग लाइनअप है। देखना पड़ेगा कि जैसे आसिफ और तौफीक जैसे खिलाड़ी, साजिद जैसे खिलाड़ी इनकी टीम पर मौजूद है। देखना पड़ेगा कि एक खड़ी संघर्ष रन यहाँ पर बननी चाहिए अपनी टीम को विजेता करने के लिए। बिल्कुल आतिफ
अपने 5वीं गेंद गेंदबाजी पर रहा। इस बार गेंद को वहां पर सेंसिबल क्रिकेट यहां पर खेलते हुए गेंद शायद अंपायर का इशारा वहां पर देखना पड़ेगा कि थर्ड अंपायर और इस वक्त रोलन पिंटो सर यहां पर कहते हुए थर्ड अंपायर के साथ इस वक्त देखना पड़ेगा कि क्या डिसीजन होगा। नॉट आउट। अब बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित मौजूद है और इसी के वजह वहां पर नॉट आउट करार देते हुए थर्ड अंपायर और इसी के साथ एक रन यहां पर ऐड होते हुए अपनी टीम के लिए और इसी के साथ रन्स आगे बढ़ते हुए 3-3 6 विकेट के नुकसान पर रहा। आखिरी बार आतिफ गेंदबाज करते हुए अब थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन करने के बाद लॉन्ग ऑन को बाहर रखते हुए डीप मिड विकेट का यहां पर बाहर रख चुका है। देखना पड़ेगा कि अब आखिरी गेंद पर क्या कुछ अपने टीम के लिए कर पाएगा या नहीं, देखना पड़ेगा। अब आखिरी बार आतिफ गेंदबाज करते हुए स्ट्राइकर एंड की निशा पर श्रवण इस वक्त खेलते हुए आखिरी बार आतिफ गेंदबाजी पर गेंद कुछ अंत तक यहाँ पर इनके हाथों पर फिसलने के बाद फिर से यहाँ पर गेंद को लेते हैं टिप्पा का पर गेंदबाजी। इस बार गेंद वहां पर ऑन साइड के निशान पर गेंद जाता है, अंपायर का इशारा वाइड करा रहा है, एक्स्ट्रा की तरफ से यहाँ पर रन मिल रहा है। वहां पर बल्लेबाजी का अपने बल्ले की तरफ से वहां पर रन लेना चाहिए था। इस वक्त गेंदबाज अपने खुद यहाँ पर गेंद रन वहां पर लेते हुए इस वक्त देते हुए और इसी के साथ एक रन अपने टीम के लिए यहाँ पर ऐड होते हुए 34 ऑन द बोर्ड। आखिरी बार इस बार स्लोअर वन गेंद परिवर्तन के तौर पर एक गेंद वहां पर थोड़ी सी स्लो रन डालने के बाद और इस वक्त धीमी गति के साथ अलॉन्ग द कारपेट जैसे अंग्रेज में कहते बिल्कुल जमीन के सारे गेंद को रख चुकी थी और इसी के साथ डॉटेड गेंद बिंदी गेंद यहां पर साबित होते हुए इस डॉटेड गेंद के साथ लोअर ऑन फुल टॉस यहाँ पर गेंद थी और समाप्त लेना चाहता हूँ और इसी वक्त 5 ओवर समाप्त करने के बाद रन संख्या यहाँ पर होते हुए 34 लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आतिफ पिछले कई मैचों पर जैसे एनएफसी उर्वा के बीच 2 ओवर फेंकने के बाद केवल 6 रन देते हुए 3 विकेटें वहाँ पर ले चुके थे और श्री मंगल देवी क्रिकेटर्स के बीच 2 ओवर फेंकने के बाद 1 विकेट 6 रन देने के बाद अब स्नेहा मालेमार के विरुद्ध 1 ओवर वहाँ पर फेंक चुके थे, कोई विकेट नहीं, 5 रन वहाँ पर दे चुके थे। केएफसी कोडिकल के विरुद्ध जो मैच हो गया था 2 ओवर फेंकने के बाद 9 रन देकर 3 विकेट वहां पर ले चुके थे। अब इन मैचों पर इस मैच पर अब आखिरी ओवर फेंकने के लिए तैयार रिलवान गेंदबाजी पर सेकंड की निशा पर रितेश समाप्त वहां पर फैजल गेंदबाजी पर इस बार गेंद सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं। इस बार गेंद विकेट कीपर को छोड़कर वहां पर जा चुका है 4 रन। इनसाइड एज होते हुए गेंद विकेट कीपर को छोड़कर वहां पर 4 रन के साथ इस चौके के साथ यहाँ पर रन से जंप होते हुए 38 ऑन द बोर्ड। जो थर्ड मैन ने वहां पर दौड़कर गेंद को रोकने के लिए कोशिश किया था जरूर, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद इनको छोड़कर बाउंड्री लाइन को पार कर चुका है। इन 4 रन के साथ रन आगे बढ़कर 38 ऑन द बोर्ड। अब 500 का इनाम यहाँ पर रितेश को यहाँ पर मिलते हुए इस बाउंड्री के साथ और दूसरी गेंद यहाँ पर गेंदबाजी पर फैजल गेंदबाज करते हुए अपने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद। इस बार गेंद वहाँ पर खेल चुके थे ऑन साइड के निशान पर, केवल एक मात्र रन न मिलेंगे, दूसरे रन वहाँ पर नहीं मिलेंगे। इस 1 रन के साथ रन आगे बढ़कर
39 on the board after completion of the second ball. 39 रन यहाँ पर बनते हुए 6 विकेट के साथ अब लाइव टेलीकास्टिंग यहाँ पर करते हुए सम्मान्य इरफान बेद्रा की सारथियों के साथ 2.1 के यहाँ पर लाइव व्यूवर्स यहाँ पर इस बार गेंद को उछाला लेकिन गेंद के नीचे यहाँ पर फील्डर आता है 1 रन वहां पर मिले दूसरे रन वहां पर मिल चुका है इन 2 रन के साथ 41 रन यहाँ पर बनते हुए 2 रन यहाँ पर मिल चुका है और इस 2 रन के साथ रन सन के यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 41 ऑन द बोर्ड आफ्टर लॉसिंग 6 विकेट्स इन दोनों बल्लेबाज अब लाइव टेलीकास्टिंग पर व्यूवर्स 1,20,000 आज यहाँ पर इस टूर्नामेंट को व्यू किया था और धन्यवाद जो इरफान बेद्रा इनकी सारथियों के साथ बेद्रा मीडिया यहाँ पर लाइव टेलीकास्टिंग करते हुए और इस वक्त गेंद को ऑन साइड के निशान पर खेलने के बाद शॉट मिड ऑन की जो फील्डर थे गेंद को कलेक्ट किया था 1 रन वहां पर दौड़कर प्राप्त कर चुका है इन 1 रन के साथ रन आगे बढ़कर 42 ऑन द बोर्ड लॉस ऑफ 6 विकेट्स अब आखिरी 2 गेंद शेष फैजाल गेंदबाज इस बार गेंद को उछाया लेकिन वहां पर गेंद को वहां पर ठीक तरीके से मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं हुआ और लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद जाते हुए आतिफ ने गेंद को कलेक्ट किया था वहां पर थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड के निशान पर इसी के पहले दौड़कर 1 रन वहां पर प्राप्त कर चुका है इस 1 रन के साथ रन आगे बढ़कर 43 ऑन द बोर्ड अब आखिरी 1 गेंद शेष है इस इनिंग्स को समाप्त करने के लिए देखना पड़ेगा कि इस गेंद पर क्या कुछ बल्लेबाजी कर पाएगा इस बार गेंद ऑफसाइड के निशान पर जाते हुए और निशान वहां पर लग चुकी थी जरूर लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट और 1 रन वहां पर मिलेगी और इस 1 रन वहां पर ऐड होते हुए रन्स जंप होते हुए 22 का इशारा और 48 रन्स हैज बीन कंप्लीट समाप्त 44 रन्स हैज बीन कंप्लीटेड टीम एनएफसी उर्वा नाउ इट इज अ 45 टारगेट 45 रन्स की लक्ष्य यहां पर रखते हुए अब मेरे साथी कमेंटेटर यहां पर ज्वाइन होते हुए समीर मलार वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमेंटेटर इन डीके डिस्ट्रिक्ट इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर देते हुए समीर जी अब 45 रन की लक्ष्य यहाँ पर देते हुए एक बलिष्ठ बैटिंग लाइनअप है एनएम की और बॉलर्ड बॉलिंग डिपार्टमेंट है एनएफसी उर्वा की अब क्या कुछ इसका बारे में कहना चाहते हैं आप Thank you, Kabir Kudroli, and once again, good evening, all the cricket lovers. So most of the cricket lovers thought that this could be going to the one-sided final, but when they scored 44 runs in that 6 over, definitely they given a fight in the first innings. They need to continue with the same fashion with the bowling. That's a possible chance for NFC Urwa to history in this Nutan Friends Trophy, the Nutan Champions Trophy 2022. Definitely this is going to be the cracker of the final match, no doubt about it. So definitely NFC Urwa, they have the advantage. They played a lot of floodlight practice matches in this area, their home ground. So definitely they can get the advantage of that. So far in the first innings definitely belongs to them. Final match, the opposition team put them bat first. They scored 44 runs.
commendable total, especially they have the very good bowling line attack. Someone like Ranjit, what a tournament he is having with the bat and ball, outstanding tournament. Can he bowl once again good over? Can these two opening pair play the same what exactly they did in the previous matches? Asif Baddoor and Taufik, this is going to be the cracker of the contest, no doubt about it. And the first over from the pavilion, and Ranjit, the very, very talented bowler of NFC Urwa. So the boundaries, they will get prize money. Fourth, they will get 500 rupees cash prize. For 6, they will get 600 rupees cash prize. Roshan Fernandez from Dubai. Yes, we are getting the green signal one last time from Roland Pinto sir, and we are heading to the final innings of the final, and so wait and see what we have in the pocket. This is going to be the Paisa Vasool match, no doubt about it. In the Mangalore versus NFC Urwa. First delivery, Asif tried to play his favorite shot. There's a misfield. They can't have that kind of luxury. They need to be sharp in the field. When you want to beat team like in Mangalore, they need to be sharp in the field. And the first run from the board of Mangalore, in fact, couple. The account of Asif Baddoor. So wonderful. The commentary panel, one of the senior most commentator, most respected person in this area, Lina sir, Firoz in Hindi, Sujit in Kannada, and also for the first inning joined Kabir Kudroli. Thanks for all the commentator behalf of Nutan friends. They made this cricket tournament along with Bedra Media. Oh, this is a massive guy by the big shot, his favorite area, and the post wicket of Mangalore back to the pavilion. Look at the celebration he started in NFC camp. Why not? They know that's the big fish, the dolphin of the opposition, back to the pavilion. Asif, his favorite area long off. They protected that area. And Prajwal, the man taken the catch. What a match he is having. Batted very well, including 3 boundaries. 1 6 and 2 4s with that innings. Collected 1,600 rupees, but this catch is more value than the 1,600 because man in a form Asif, very first over, they can put the pressure on the batting line of NM now. Now the promotion we can see, normally Atif coming at number 4, now he is coming at number 3 for NM Mangalore. First wicket loss. So normally we seen Sajid coming at the top of the order. They would little demoted him because he's that one more distractive batsman. Might be he'll come at the middle order. But here, the 2 experienced men, Taufik and Atif, all the job they need to do from here. But what a brilliant start. Absolutely brilliant start here for NFC Urwa. But don't underestimate the strength of that man, Taufik. How many times when NM in struggle, that man performed like a hero, single-handedly won the match. Oh, lovely delivery. Almost like a directly trick wide. They gone for the third umpire. That is definitely 50-50 call. If the better throw near to the bales of the non-strikers, and there could have been possible chance. Throw really wide, top of the hand. Oh, you had to stretch it. Definitely the touch and go that. That's a 50-50 call. Suresh Modabidre, the third umpire. Yes, is getting... but look at that throw. That's the only thing can save Taufik here. Because of that throw, he had 1 extra second to reach. We need a conclusive evidence because that angle... we cannot get anything from that angle. We need one more angle to find out that is the batsman reached or not. Definitely the heart in their mouth, the NM Mangalore dugout, because if they lost Taufik in this moment, definitely
Could have been much better time for NFC Urwa. So definitely the touch and go there. That's why Suresh Mudabidre taking a little time because decision can be go either way. That's why you don't want to take risk there. You need all possible angle to find out the correct verdict. That's why he was checking all the angles. Yeah, this is the good angle he can might be get. It might be need one more frame that. It need to be more than 100% conclusive evidence to give right verdict. That's why he was still checking all possible angle. Because batsmen have only one chance. Oh, this might be give some. I think he almost reached there, but still. And he's out. Tawfiq back to the pavilion. So Mangalore lost the second wicket. So lines belongs for the umpire. The bat on the line when the bails are come out. The some part of bat should be over the line. That what exactly third umpire checked. And Tawfiq, the man, departed. Big wicket for NFC Urwa.
Both opener back to the pavilion during the first over of the power play. That's what I am exactly saying, that if NFC Urwa scored more than a 43 run, they picked up early wicket, they have the possible chance. Here is Sajid, the man who can turn the match single-handedly. We've seen lots of example, especially that innings for Team Elegant Mangalore in their 30-over format. He scored 60 run in 62 ball in that quarter-final match against KFC Kodigal. That the tied match, Team Elegant versus KFC Kodigal. In that match, Sajid scored 60 run in 62 ball. So definitely have the ability of playing the good innings. Distractive batsman Sajid at the non-striker's end. And here is Ranjit. Atif, what a brilliant start for NFC Urwa. Courtesy of some brilliant fielding all the time. There's a big appeal. Bowled out and Atif walking back to the pavilion. They are gone with the appeal. No one is not there. Even wicketkeeper was only the person knows that bails are come out. Yes, bowled out. Ball hit the leg stump. Bails are come out. Big wicket of Atif back to the pavilion. Most of the people said this is going to be the one-sided final, but I am afraid that this is going to other side, one side maybe. So far it's looked like that, but what a brilliant art performance from NFC Urwa. Here is Irshad with experience. If you look at the entire squad of young NFC Urwa, the man who's leading 45-year-old, other than that, if you look at that entire 10-member, average age is 22 to 23. One person who marshalling the team, might be the 45, that man, Sandeep, at short extra cover. Definitely promising youngster. This is the advantage of home ground. They are really practicing in this ground many years. They know every stone of in this ground. That's why this is not going to be one-sided effort. Maybe going one side, if they bowled better than this upcoming overs, they can beat NM Mangalore. But cricket is a glorious uncertainty. Anything can possible. Oh, this time the ball is gone. That is hitting the middle of the middle stump. This is almost action replay. What exactly week ago in Ullah Cricket Association, Ishad got LBW in the same fashion against young friends Ullah while he playing for brothers Makyar. He tried to play the sweep, cross-batted sweep shot, and he was little off balance while playing the shot. Ball hit the pad, and no doubt in the mind of 37-year experienced man. He knows ball hitting the middle of the middle stump. Straight away he lifted his finger, and one more wicket of NM Mangalore. They are in a deep trouble. What a brilliant first over for Ranjit and NFC Urwa. They already started celebration in the dugout of NFC Urwa. They knows if they able to do victory from here, not only clinch the title, also lots of confidence upcoming tournament for them, for NFC Urwa. And here, still NM Mangalore, they can win this match, but one good partnership, at least 15 to 20 run. Ayaz and Sajid, both are capable player. They need a good partnership here. They can come back in this match, but so far so good. NFC Urwa, Ranjit, the main architect, the young talented all-rounder of NFC Urwa. He's on hat-trick. Ranjit. Hit the pad. I think slight bat involved there. That's the only thing saved by Ayaz. But what a brilliant over. Excellent over. Look at that figure to read. Conceded 4 run and picked up 3 run. And picked up 4 wicket in the first over. Brilliant first over for NFC Urwa.
3 wickets on his account. 1 came as an out. Definitely NM Mangalore, they have the depth in their batting lineup, but their top order tested in the final. This is the time for middle order. Why they are the champions players? Why they are playing for NM Mangalore? This is the time to answer the question for all the cricket lovers, those who are love NM team. Even in the first match against KFC Kodigal, they lost 4 wickets in a very first over against Nizam. After their good partnership between Ayaz and Atif, they lost 4 wickets in just 7 runs. All the 7 runs came as extra in that match against KFC Kodigal. And situation is similar to them. Can they once again do the partnership here? It is young Ritesh. Oh, this is a really good cricket from Ayaz. He knows you can't play the big shot. So this is the time to rotate the strike and build one small partnership. At least 15 to 20 run. Can NM Mangalore come back in this match? We all know Sajid is a distractive player, but the situation is demanding cool and calm cricket. Cricket is not all about hitting the 4s and 6s. Cricket is all about the play according to the situation of the match. And Sajid need to play that kind of innings. He have the ability. Oh, lovely delivery. Very good work from Sandeep. Tried his left hand, tried to stop that ball. If he able to grab it, that could have brilliant catch. That area of the ground in 2018, third KPL, Kudla Premier League, first match, BK Tiger versus Urwa Bulls. Ashwin Thaman taken the catch. When he fell down, his hand is broken in that match. That's the same area where Ari saw BK Tiger hit the reverse hit. And Ashwin taken a brilliant catch. Ashwin Thaman, 4 years back in that Kudla Premier League season 3. And here is try to go for the reverse hit. Missed the line completely. There is a dotted ball. Nevertheless, what a brilliant start here for NFC Urwa. Most of the spectators, normally we seen most of the supporters supporting for NM Mangalore, but in this time we can see the ground covered by NFC Urwa supporter. Every wicket we can see the cheer, but match is not finished yet. Or this time sliding down the leg side. You need to put the pressure, put the right delivery, try to attack the stump line, try to make batsmen some mistake. If you bowl that kind of delivery, the releasing the pressure from the batsman, that gives some advantage for NM Mangalore. Young Ritesh need to learn that. It is once again lovely delivery, well played into this wide. Oh, the one-handed pick up and throw. They might be taking the chance with the second run. I think Prajwal the man, whatever touch that became goal for them until that moment. If directed Sajid not in a frame as well as. We're in the almost midnight, but look at the cricket supporter. This is the beauty of the Underarm cricket, especially in UCG. They love how much in this Underarm cricket. Rohan Montero, really proud person, conducting such a wonderful cricket tournament in the memory of his father, the late Austin Montero. This time by signal from umpire Vivek. One more added form of the extra score. Now slowly moves on to 9 on the board. What a brilliant performance from young talented team NFC Urwa. Their home ground, they're really enjoying each and every moment. Oh, Sajid with the shot. Oh, what a catch. He put down that when he fell down. I think some injury concern over there for Sandeep. I hope that that's not that much serious. He is a wonderful cricketer of NFC Urwa. Even all the NM Mangalore players also going to him. That's a good sign, good spirit of the game. The humanity is important more than anything. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
That's a brilliant effort. Almost he was catching it. But in the end, when he fell down, yes, that after completing his catch, his head is fell down. So after his completing his catch, he was fell down. He's hurt. We all pray him. He will recover soon with the Almighty God. He's a wonderful human being.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕೇವಲ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
I request the skippers of both the teams to report here immediately. NM cricketers as well as NFC Urwa. I request the skipper of NFC to report here immediately upstairs for the I request even the skipper of NM cricketers to report here immediately upstairs. Both the skippers, NM as well as NFC Urwa. I request the spectators to clear the field as soon as possible. Clear the field as soon as possible. As far as the sources are confirmed from the hospital, Sandeep condition is really good, pretty good. So I request both the skippers of NFC as well as NM cricketers to report here immediately upstairs. And I request the spectators, earnest request to the spectators to clear the ground. Earnest request. Let us all pray for Sandeep's speedy recovery.
So I request the spectators to clear the ground as soon as possible. We are going to resume the match. So I will pray for Sandeep's speedy recovery. It was really great commitment there by Sandeep. Went for that catch and he came down heavily on his back of his head. The back of his head banged against the ground. For a moment, it looked like he was unconscious, but he has regained the conscience and he has been talking. As far as the sources from the hospital is concerned, Sharon was the one who told us that he's okay now, right now. We hope he'll recover as soon as possible. Wonderful commitment there by Sandeep. Being almost in his 40s, mid-40s, that was really wonderful commitment there by Sandeep. On this ground, no one will think of diving on this ground, which is always prone to injuries. And Sandeep was the one for his team, went for that catch. Unfortunately for him, he fell backwards and his head banged against the ground. Back of his head banged against the ground. He had taken that catch, but when the back of his head hit the ground, the ball popped up his hands. Superb commitment there by Sandeep. Once again, we will pray for his speedy recovery. Ten for the loss of 4 wickets. 45 runs required for victory. NFC cricketers, what a commitment it was by Sandeep. Hats off to Sandeep. Unfortunately, he's off the field. Tremendous effort by someone who is in his mid-40s. Got recently married. Superb commitment. I've never seen such a commitment on the cricket field by someone who is 40 plus. Went running back, managed to get both his hands to the ball, but he lost his balance, lost his footing, and his back went and hit the ground, and the back of his head banged against the ground, and he was taken off the field, was carried off the field. Let us pray for Sandeep's speedy recovery. So 10 for the loss of 4 wickets, 45 runs required for victory. And I request Firoz to take over the commentary. शुक्रिया लिनस रोलैंड पिंडो मैच की शुरुआत की आगाज देते हुए 24 बॉल 35 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए 24 was left 35 रन रिक्वायर्ड टू इन दिस मैच ड्राइव कर दिया लॉन्ग रन की दिशा में 1 रन का इजाफा हो सकता था वहां पर नॉन स्ट्राइक रन पर शाही नहीं कर पाए फिर भी बॉल बच गए वहां पर 1 रन जरूर मिला है बल्लेबाज के खाते में कुल मिलाकर स्कोर है 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है 45 रन का 45 इज अ टारगेट टू विन दिस मैच सो 11 रन ऑलरेडी दे स्कोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इस बीच फुल टॉस गेंद हल्का से उसको फ्लिक कर दिया गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद 1 रन आसानी के साथ ही बल्लेबाज के खाते में इस एक के साथ ही कुल स्कोर के अंक पर 12 4 विकेट के नुकसान और ये गेंद रिसीव कर दिया वहां पर सीधा बॉन्डलाइन के ऊपर से 6 रन के लिए छह रन के साथ ही स्कोर हो गया अभी 18 एक ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को खोने के बाद में थोड़ी बहुत राहत इस छक्के की वजह से मिल सकती है और इस छक्के के लिए उनको प्राइज मनी भी वहां पे अनाउंस हो चुका है 600 रोशन फर्नांडी की तरफ से इस बीच 18 रन स्कोर पर 4 विकेट के नुकसान पर
एक बीच नितेश तैयार गेंद करने के लिए, अच्छी गेंद पिच पर जरूर खेला, उसको फॉलो थ्रू में और रनर की खतरा हो सकता है वहां पर। दोनों बैट्समैन रन हाँ या ना में आखिरी वक्त इरादा बदलते हुए अपने अपनी जगह पर सुरक्षित, दोनों बल्लेबाज रन की कोई गुंजाइश ही नहीं वहां पर। 18 रन स्कोर पर 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट एक ही ओवर में उन्होंने खोया है। इस बीच बैट पर जरूर लिया है लेकिन रन का कोई गुंजाइश नहीं, दबाव में जरूर दिख रहे हैं वहां पर साजिद जो कि 11 पर के रहे 8 गेंद का सामना करते हुए। हयाज है एक और 4 गेंदों में 3 रन, एक ही ओवर में 4 झटका उनको जरूर लगे एनएम के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर रिसीव करे प्रयास को सक्सेस भी मिला है उनको। ड्राइव करते साथ ही एक ही रन पर निकल पड़े, दूसरे के लिए कॉल तो था लेकिन आखिर पर इरादा अपना बदलते हुए अपने जगह पर सुरक्षित वहां पर दोनों बल्लेबाज। कुल मिलाकर स्कोर हो गया वहां पर 19। साझेदारी 5वें विकेट के लिए अब तक 17 रन 13 गेंद में, जिसमें साजिद का कंट्रीब्यूशन रहा 9 गेंद में 12 और 4 गेंद में। इस बीच 19 रन स्कोर पर 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए, यानी 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब बचे 3 ओवर, अभी 19 रन बन चुके हैं बोर्ड पर। सो 26 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 26 रन मोर रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच एंड रिमेनिंग 3 ओवर्स। लक्ष्य का पीछा करते हुए सही ढंग से मेरे ख्याल से अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं 4 विकेट गिरने के बाद में एनएम के प्लेयर्स, क्योंकि पिछला जो ओवर हम लोग देखे यहाँ पे उस ओवर में छक्का भी लगा है और एक जो रन रेट को आगे बढ़ने में थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिली है वहां पर साजिद के लिए, और साजिद उनका साथ देने के लिए बखूबी वहां पर साथ दे रहे हैं। हयाज जो कभी कड़े हैं नॉट रन पर। अजय तैयार गेंद करने के लिए। आरएम एसोसिएट्स की तरफ से अजय गेंद करेंगे, उनके सामने बल्लेबाज है साजिद। 12 पर के एक चक्कर की मदद से 9 गेंद का सामना करते हुए अजय इस बीच गेंद करेंगे साजिद को। लेग स्टिक की काफी भारतीय गेंद, वाइड का इशारा देते हुए अंपायर 1 रन गिफ्टेड रन। इस मौके पर इस तरह से रन की जरूरत एनएम के लिए, क्योंकि रन भी मिलेगा बॉल भी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कुल मिलाकर स्कोर हो गया वहां पर 20। 25 रन और मैच चाहिए इसमें जीतने के लिए। सीप कर दिया, सीप के साथ निकल रहा पर रन के लिए काफी तुरंत वहां पर चुस्ती के साथ उसको रोकने में जरूर कामयाब, लेकिन इस बीच 1 रन। हम लोग ने देखा कि एनएफसी के खिलाड़ी पूरा जान इस मैच में लगा चुके हैं इस मैच जीतने के लिए, और एक और से इनम के प्लेयर भी अभी थोड़ी बहुत राहत पिछले ओवर के बाद में, और इस लेग बाई के साथ ही स्कोर हुआ पर 22। 22 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। साजिद तैयार एक बार फिर 13 पर के 10 गेंद का सामना करते हुए साजिद ने उसको उठा दिया, और ये अननेसेसरी शॉट फील्डर को बगैर देखे हुए, फील्ड प्लेसमेंट बगैर देखे हुए रिवर्स स्वीप बीट नहीं कर पाया उसको। और सही ढंग से मैं तारीफ करना चाहूंगा एनएफसी उर्वा के कप्तान, सही ढंग से सही फील्डर को वहां पर रखा है, और एक महत्वपूर्ण विकेट एनएम का कप्तान स्वयं वहां पर उस कैच को लपकने में कामयाब। इस तरह से 5वां विकेट, आधी टीम ऑलरेडी पहुंच जा चुकी है एनएम की। इस तरह से 5वां विकेट अभी अभी खोया है, कप्तान स्वयं उस कैच को लपक किया। इस तरह से साजिद जो कि अच्छी एक खतरनाक बैट्समैन के रूप में उभरने वाले थे, उनको वापस पेलन पर भेजने में कामयाब। हयाज एक और असहाय खड़े हैं और साथ देने के लिए देखेंगे अब नया बैट्समैन रियाज। 32 नंबर के जर्सी में जा रहे हैं रियाज साथ देने के लिए हयाज का। 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर चाहिए इस मैच जीतने के लिए, और 23 रन। 22 they made, now 23 run required, and they have only 5 wickets in hand now.
अजय तैयार गेंद करने के लिए, उनके सामने बल्लेबाज रियाज। अजय रियाज को लेग स्टिक के बाहर तेज जाने दिया और एक और गिफ्टेड रन। मैं पहले कह चुका था कि ऐसे जो गिफ्टेड रन है वो जरूरत है इस बार एनएम के लिए। गेंद भी मिलेगी और एक्स्ट्रा बॉल भी मिलेगी, और जैसे मैं कह रहा था एक बार लगातार दूसरी वाइड, इस 2 वाइड के मदद से स्कोर वहां पर 24 रन को पर 21 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। एक बार फिर वाले स्टिक की बाहर फ्लिक कर दिया अंपायर के ऊपर से उठाते हुए, मिड विकेट की दिशा में दूसरे रन के लिए कॉल था और काफी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। तारीफ करनी पड़ेगी एनएम के प्लेयर्स के, कॉल था रन के लिए और 1 रन कन्वर्ट करके 2 रन वहां पर पूरा किया बैट्समैनों ने। इस 2 रन के साथ अपना खाता खोला है वहां पर रियाज। कुल मिलाकर अपनी टीम का स्कोर को पहुंचा दिया 26 पर 19 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। अजय एक बार फिर अपने बोलिंग क्रम जारी रखते हुए RM एसोसिएशन की तरफ से गेंद करने के लिए रियाज जो कि खेल रहे 2 पर। ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रही, काफी नीचे रही थी गेंद, हवा में घुमाता 9 रन पर आगे निकले थे बैट्समैन, लेकिन सब एपील का स्ट्राइकर एंड पर सबका ध्यान था। इसका नतीजा बार बार बच गए थे वहां पर 9 रन के हयाज। रन बटोरने का कोई गुंजाइश ही नहीं वहां पर, स्कोर में कोई तब्दीली नहीं है। 26 रन 5 विकेट खोकर आखिरी गेंद डालने के लिए वहां पर अजय। इस ओवर की आखिरी गेंद रियाज के लिए। स्कोर है 26 रन 19 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। रियाज ने इसको खेल दिया एक्स्ट्रा और कवर की दिशा में, गेंद सीमा के करीब करीब जा रहे, उसके नीचे फील्डर भाग रहे, 1 रन भाग कर पूरे किया। 2 रन के लिए कॉल था और ये खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बच गए। दोनों साइड से रन आउट का खतरा हो सकता था, दोनों साइड से रन आउट का खतरा हो सकता था। रियाज का कॉल था, 9 पर जो खड़े थे वहां पर हयाज समझ नहीं पाए थे भागो या ना भागो। आखिर वक्त तो इरादा बदलते हुए रिस्क जरूरी था इस मौके पर और ये स्कोर को कंप्लीट किया। कुल 3 रन मिला है। मैं कह सकता हूं कि 3 रन रिस्की था, लेकिन 3 के मदद से स्कोर हुआ है वहां पर 29 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 4 ओवर समाप्त हो चुका है, 12 गेंद बचे हैं, 16 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 2 ओवर बचे हैं, 16 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 16 रन रिक्वायर्ड इन 2 overs and they have plenty wickets in hand. Half team already went to pavilion, now they have 5 wickets in hand. रियाज और हयाज दोनों यहाँ पे पारी संभाली है। साजिद आउट ऑन बैट्समैन थे। एक ही ओवर में 4 जो विकेट गिरा है, उसके बाद में उभरते हुए थोड़ा पार्टनरशिप जरूर बना था हयाज और साजिद के बीच में, उसको तोड़ने में कामयाब जरूर रहे एनएफसी के प्लेयर्स, लेकिन उस बीच रियाज है नए बल्लेबाज और काफी चुस्ती से रन को चुरा रहे हैं वहां पर रियाज। 12 गेंद में 16 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए। नीतेश है गेंदबाज, उनके सामने बल्लेबाज वहां पर रियाज खेल रहे हैं 5 पर 3 गेंद का सामना करते हुए। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, वी ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, we have to complete this match soon as possible. Only 2 overs remaining in this match. This is the grand finale of this tournament. So match is playing between NM Manglore versus NFC Urwa. So NFC Urwa ने टॉस जीतकर फील्ड करते मैंगलोर ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया था। 45 रन का लक्ष्य मिला है उनको और लेग स्टिक की काफी बाहर ये गेंद। इसके ये जो वाइड और एक्स्ट्रा जो रन मिलता है और एक्स्ट्रा गेंद भी मिलता है ना, यही आखिरी वक्त पर उनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा, एक्स्ट्रा गेंद भी मिलेगा। और ये जो एक्स्ट्रा से गिफ्टेड रन और इस एक्स्ट्रा से स्कोर हो गया वहां पर 31 रन। 2 रन की मदद से स्कोर 31 पर पहुंचा दिया। स्वीप कर दिया, यहाँ पर शॉट फाइनल की दिशा में जहां पर मोड़ दिया था। 1 रन
बल्लेबाज के खाते में। इस एक रन साथ ही उनका निजी स्कोर गया 4, कुल मिलाकर टीम का स्कोर गया 32। अभी 13 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। एनएफसी को कमबैक करने के लिए अच्छी गेंद और चुस्ती फील्डिंग जरूर चाहिए इस मैच जीतने के लिए, जो कि पिछले कुछ गेंद लाइन और लेंथ खो रहे थे। इस बीच जो हल्का सा फ्लिक करना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में खेल दिया, वहां पर मोड़ दिया था उसको। 1 रन का इजाफा रियाज के खाते में। कुल मिलाकर टोटल हो गया वहां पर 33। 33 ऑन द बोर्ड, 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 12 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। जीत किसी और भी जा सकता है। नीतीश एक बार फिर अपने बॉलिंग के क्रम जारी रखते हुए इसको हल्का सा फ्लिक कर दिया, वहां पे फील्डर जरूर मौजूद। 1 ही रन पर संतुष्ट, काफी सुंदर सा तो स्ट्राइकर रन पर, लेकिन इस बीच 1 रन चुराने में दोनों बैट्समैन कामयाब। इस एक साथ ही कुल स्कोर यहाँ पर 34। 11 रन चाहिए, 9 गेंद में 11 रन चाहिए। 9 बॉल्स लेफ्ट, 11 रन रिक्वायर्ड। इजी टास्क कह सकते हैं इस स्टेज पर, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि एक ही ओवर में 4 विकेट एनएम का गिरा था। बैक फुट पर जाकर हल्का सा फ्लेक अच्छी तरह से उसको रोकने में कामयाब, लेकिन सही ढंग से फील्ड नहीं कर पाए। दबाव दोनों टीम के ऊपर साफ साफ नजर आ रहा है। और 1 रन इजाफा, इस एक रन साथ ही स्कोर हो गया यहाँ पर 35। नाउ 10 रन मोर रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। 10 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए एनएम के लिए। और के एनएफसी को जरूरत है कि कुछ टाइट बॉलिंग और चुस्ती फील्डिंग। इस बीच बैक फुट पर जाकर ड्राइव कर दिया, कवर के दिशा में काफी बड़ा गैप था। 1 रन बाकर पूरे के लिए, दूसरे के लिए कॉल था पर स्ट्राइकर रन पर थ्रो जरूर आया है, लेकिन 2 रन चुराने में कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के बीच में। और स्कोर मूव्स ऑन टू नाउ 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। टारगेट इज 45। 7 balls, 8 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। कुछ भी हो सकता है। हम लोग देखा है कि 2 गेंद में 1 रन भी बनाने को नहीं हुआ था पिछले मैच में। ऐसे में कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। और इस बीच हल्का सा फ्लिक करना चाहते थे उसको, शॉट फाइनल की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन साथ ही कुल स्कोर हो गया यहाँ पर 38। 38 ऑन द बोर्ड, 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। आखिरी ओवर बचे, आखिरी ओवर में चाहिए 7 रन। 6 गेंद 7 रन इस मैच जीतने के लिए। विकेट उनके पास अभी भी 5 खिलाड़ी बाकी है। इस बीच बिद्रे मीडिया जो लाइव टेलीकास्ट दे रहा है इस मैच का, वर्ल्ड वाइड से 3K यानी 3000 लोग अभी फिलहाल इस मैच को वॉच देख रहे हैं, फाइनल को। सो ओवरऑल आज इस टूर्नामेंट को 1,27,000 लोगों ने देखा है। 1,27,000 people already watched this tournament. Meanwhile, present this match particularly 2,000 people are watching through, I beg your pardon, 3,000 people is watching through Bedra Media's YouTube channel. Thanks for the एनएम ने अब तक सिर्फ 5 विकेट खोया है, और अगर एनएफसी की बात किया जाए तो वो 6 विकेट फाइनल में खो चुके थे। क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अभी 6 गेंद बचे हैं, 7 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 5 खिलाड़ी अभी भी उनके पास मौजूद। एक बार फिर रंजीत एक बार फिर आ रहे हैं वहां पर। RM एसोसिएट इनकी तरफ से रंजीत गेंद करने के लिए। उनके सामने बल्लेबाज हयाज और रियाज के बीच में पार्टनरशिप 9 गेंद में 16 रन की। अब तक नाबाद पार्टनरशिप 6ठी विकेट की साझेदारी। 9 गेंद में 16 रन की 6ठी विकेट की साझेदारी नाबाद हयाज और रियाज के बीच में। हयाज तैयार सामने करने के लिए। उनके सामने गेंदबाज रंजीत।
रंजीत तैयार गेंद करने के लिए हैस के लिए नॉन स्ट्राइक रेंट यानी RM एसोसिएट की तरफ से अंपायर क्रॉस करते हुए ये गेंद हल्का सा फ्लिक कर दिया वहाँ पर स्क्वायर पर खेलते हुए कुछ भी रिस्क वहाँ पर नहीं ले रहे दोनों बल्लेबाज हर एक गेंद में सिंगल चुराने में कामयाब इस सिंगल के साथ ही स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हो गया अभी 39 5 गेंद बचे हैं अब चाहिए 6 रन इस मैच जीतने के लिए NM के लिए 5 गेंद 6 रन इस मैच जीतने के लिए 5 विकेट उनके पास अभी भी है विकेट को बचाते हुए दोनों धीरे धीरे हर एक सिंगल को कन्वर्ट करते हुए डबल के साथ आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं अब चाहिए वहां पर 5 गेंद 6 रन इस मैच जीतने ट्रॉफी जीतने के लिए एक बार फिर गार्ड लेते हुए अंपायर से रियाज बैटिंग के लिए तैयार वहां पर 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 39 रन बन चुका है They're chasing a target of 45. They already made 39 on the board for the loss of 5 wickets. Last over in progress. बॉलर रंजीत इस बीच गेंद करेंगे वहां पर रियाज के लिए 5 गेंद 6 रन इस मैच जीतने के लिए ट्रॉफी जीतने के लिए रंजीत तैयार गेंद करेंगे अंपायर को क्रॉस करते हुए विकेट के नजदीक से हल्का सा फ्लिक कर दिया अक्षर की दिशा से ऊपर से उठा दिया वहां पर फील्डर मौजूद और काफी एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रियाज और हयास के बीच में और लक्ष्य के करीब करीब आते हुए अब चाहिए 4 गेंद 4 रन 41 पर पहुंचा दिया स्कोर को 41 on the board for the loss of only 5 wickets. Now 4 balls left, 4 run required. So 4 गेंद में 4 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए रियाज ने पारी संभाली है कमान संभाली है रियाज ने उनका अच्छा बखूबी अच्छा साथ देते हुए हयास रंजीत और रंजीत तैयार गेंद करने के लिए रियाज के लिए रियाज ने बैक फुट जाकर सीधा ड्राइव कर दिया वहां पर लॉन्ग रन के दिशा में फील्डर मौजूद धीरे धीरे सिंगल चुराते हुए दोनों बैट्समैन लक्ष्य के और भी करीब आते हुए 3 गेंद 3 रन 3 गेंद में 3 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए एनएम के दोनों खिलाड़ी काफी मजबूत के साथ वहां पर बैटिंग करते हुए कुछ भी वहां पर रिस्क लेने के प्रयास करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वहां पर हयाज इस बीच तैयार सामना करने के लिए रंजीत का 3 गेंद में 3 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए हल्का सा पुश करना चाहते थे वहां पर शॉट थर्ड मैन की दिशा में 1 रन लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा अब चाहिए 2 गेंद में 2 रन दो गेंद में 2 रन so NFC they lost 6 wickets and so far NM they lost only 5 wickets that is the equation so 2 गेंद 2 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए सो रंजीत तैयार गेंद करने के लिए रियाज को 2 गेंद में 2 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए 2 रन रिक्वायर्ड इन 2 बॉल्स प्रेशर साफ दिखाई दे रहे हैं वहां पर दोनों टीम के ऊपर फील्डर को थोड़ा अंदर लिया गया वहां पर एक्स्ट्रा फील्डर ऑन साइड पर सिंगल स्कोर रोकने के लिए और इसका बैक फॉर जाकर ड्राइव करते हैं ड्राइव के साथ ही एनएम ने निकाल दिया है और 1 रन बाकर पूरे करे दूसरे के लिए कॉल था और ये 2 रन के साथ ही एनएम ने नूतन ट्रॉफी 2022 को अपने पक्ष में कर लिया है एक ही ओवर में 4 विकेट गिरने के बाद में ऐसा लग रहा था कि मैच 1 साइडेड हो जाएगा लेकिन कह सकते हैं कि क्रिकेट जो आखिरी गेंद आखिरी विकेट तक क्रिकेट का कुछ भी नहीं कर सकता इसके साथ यहाँ पर एनएम ने ये मैच 5 विकेट से जीतकर ये ट्रॉफी अपने हक में किया है बधाई के हकदार है एनएम के
प्लेयर और वही साथ ही एनएफसी के प्लेयर भी बहुत अच्छी उनका कोशिश रही, जान लगाए थे पूरा अपना इसमें, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से वो भी विनर ही है एनएफसी, क्योंकि हमने देखा कि इस बीच एक अचातुर यानी एक्सीडेंट भी हुआ था वहाँ पे फील्ड में, फील्ड करने के प्रयास में डाई लगाकर उसको कैच को लपक जरूर लिया था, लेकिन करेक्ट पीछे गिरने की वजह से थोड़ा सा उनको इंजरी जरूर हुआ है। हमारे सब प्रार्थना उनके साथ में है, उम्मीद है कि वो जल्दी रिकवरी होकर वापस फील्ड पर आए। इस बीच इस मैच को एनएम ने जीत लिया है। कंग्रेचुलेशन टू एनएम and also congratulations for NFC, they played very well. So meanwhile अभी थोड़ी देर में presentation ceremony हो जाएगा, so I request all the players and all the spectators, please come to us to the stage. So we have some individual prizes also and some cash prizes we are announced in this final match. For every 4, every 6ers, we have to calculate everything. So I request all the players and all the spectators, please come to us to the stage, not here to under this commentary box. The stage is all set to the presentation ceremony. So see you there for the presentation.
ಉರ್ವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸಮಾರಂಭ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಜಿತ್ ಉರ್ವ, ನೂತನ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಹನ್ ಮಂತೇರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಿಯ ಮಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಂತೇಶ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಇವರು ಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ UFC ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಇವರು ಪುಷ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿರುವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಇವರು ಪ್ರಜಿತ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮಂತಿರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ರವರು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲ್ಲರ್ರವರೇ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋಲೂರ್ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ UFC ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮುಂತೇರವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So, good evening. We are going to honor three cricketers, ex-cricketers who gave everything to cricket. So, I'll name the three players: Mohan Suvarna, and Lakshman Kulal, and Munna. Francis, his name is Francis, and we call him as Munna. So, I request all three gentlemen, please come to the dais and take your seats, please. We have very small introduction. Pure erla sari itkenle dumbada player nakal elliya introduction aine nimsha sari kenle. Thank you. So we'll start with Mohan. He started his career in 1984 playing for Canara Cricketers Urwa. Played for 2 years. Then again he had a business opportunity, like he was an employee for Jugal Sports Club. So he was playing for Jugal Sports Club for 15 years, and Jugal Sports Club, we all know, they are at that point of time they have taken 5 winners in UFC trophy. Playing for Jugal Sports Club, Mohan was the key member for Jugal Sports Club. Then played for my team Young Friends Urwa for 8 years, won many trophies with his bowling. Played for a year for Gokul Cricketers and won the UFC trophy. Played for Padangadi Cricketers for 1 year. Again, he was a runner-up. More than that, one good thing about Mohan is a very good bowling action and very good bowler.
According to me, he is the number one bowler as of now. I have not seen a bowler like Mohan Sorna. Agree? Yes, that's the spirit. And one more thing, whoever has played in our era, he was the player played with a coffee brown t-shirt, sleeveless, which is not allowed here. Roland will shout at me. With sleeveless shirt, brown t-shirt. I used to ask Mohan, "Olundo t-shirt itala unda ande." But he played with that t-shirt for 18 long years, and very lucky t-shirt. And his performance, one of the seasons for in UFC trophy, he has taken, according to my knowledge, he has taken 37 wickets. So almost 6 matches maybe, and he has taken 37 valuable wickets for his team. And his best figures for, he has taken 8 wickets. And in I was in that match. We lost to one of the big team in Panir, and his bowling figures as follows: 2 overs, 3 runs. No. 2 overs, 2 maidens, 7 wickets. So I don't think in 2 overs anybody can take 7 wickets. When we lost the match, after it was a tie match, and I was in tears actually. I was the captain of that team. A semi-final match. It's a part of game, so I'll accept it. And while writing this small introduction, Linus told me to add one sentence. He was able to break the stumps with pace, and one of the wicket has been broken. So maybe Linus has observed it, and he has told me to add this. Thank you, Linus. Ball padnaga stump katta atanige bowling, underarm bowling id. So it is one of the greatest performance. And one, apart from cricket, one small in sports, sports related. He used to play very good cricket, everybody knows. But he gave us a surprise when I was studying in Canberra High School. He was also my senior. I don't want to name that person's name, who used to in Mangala Stadium. He used to jog, walk, and do exercise for more than 3 hours. He was almost in the Mangala Stadium, and he used to run very fast in 100 meters. And that guy used to do it for continuous 2-3 years. Radu Muju varsha continuous a ground udu. Baltondu spikes part the yantu. I have seen that running. I have seen that man also. I don't want to name that name because it's going to be a small insult for him. But I have seen that man doing this. But there was a competition, 100 meters race. I don't know who was organizing it. Suddenly one person enters into the Mangala Stadium ground. No shoes bradalej. That there Kali card. And he has beaten that man, and it is Mohan Suvarna. And I am proud to say, you are still telling me that timing of 11.02, and if you had given more practice, you would have been better. You would have been better that timing. So this is a small introduction of Mohan Suvarna. Thank you, Mohan Suvarna, for giving us beautiful memories. Thank you, sir. So that was Mohan Suvarna's introduction. So next comes to Lakshman. Lakshman Purela Gottu, Namma Urdar. And started his career 1983 with Mangala Urwa. Ingal elli opanaga first tupin Urda team banda Mangala Urwa. Pura local Javanir edde team set mal there. And it was rated one of the best teams at that point of time. UFC trophy dar onje team udgobu there. Highest mastu varsha onje team udgobu there. And ee onje aaj over ball padderar ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ಆಕುಲ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆತಿರ್ ಅನ್ಗೋತಿಂಗ್ ಎನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಆಕುಲ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇರ್ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಡಾರು 5 overs ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಜ್ ವಿಕೆಟ್ ದೇ ಇದೇರ್ ಆಜ್ ಓವರ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ದು 5 overs ಮೇಡನ್ ಮಲ್ತದು 6 wickets ದೇ ಇದೇರ್ and he was awarded the man of the match, and he also played for
ಜುಗುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಫಾರ್ 2 years. ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಜುಗುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನಗ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಏರಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆರಡ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಮಾಲ್ಕಮ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಉರುವಾದ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರನ್ನ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಕೊಬುದೇರು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. So giving us good memories. Thank you. And third, not the least, Francis Pandey regula gottiji. Munna Pandey pura regula gottu. Tumbu gobonditinagle pura telipper. Itadakle gottu puji Munna Pandey eren. Okay. Munna is a left-handed batsman, and he played for Young Boys Hampankatta for 3 years. Ana career start maltin Young Boys Hampankatta mulpa. And he played for Jugul Sports Club for 13 glorious years. 13 glorious years ಮುನ್ನೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಹಾಕಲು 4 ಟ್ರಾಫಿ ಹಾಕಿನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆವೊಂದಿತ್ತೀಜ ಅಂಚ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹಾಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಇಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲು 12th man 13th man ಓಪನ್ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ನಾಚಿಗೇಜಿ. Okay, and he played for Young Friends for 2 years. Played for Mangal Devi and Morgan Gates. Above 40 category, 40 above the match anaga Morgan Gates lagobu there. And left-hander pannaga poor erla banper. Ittinakul poor mid wicket ga hakuveru. Everybody agree with me. Onja mid wicket gi jinna onja mid on ge onja adege hakun. And I have seen only one player who played all full grounded pura strokes that is Munna. I have seen that. I have openly I'll challenge everyone that he is the one player all corners of the ground. That is Munna. Thanks for Munna for the good memories. And we are going to honor, and I request all the guests to honor our 3 very good cricketers. ಧನ್ಯವಾದ ರೋಹನ್ ಮುಂತಿರರವರೇ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲೆ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ತದನಂತರ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಇಂತಹ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಯಾರೆಂದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಶ್ರೀಧರ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣಿಯವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟದ ಒಂದು ವೈಖರಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರ್ಫಾನ್ ರವರೇ ವೇದಿಕೆತ್ತ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ. ಅಂತಹ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಫಿರೋಜ್ ರವರೇ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಗದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಂದ ತಾವು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರೇ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮುನ್ನಾ ಇವರಿಂದ ಶಾಲು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಜಿತ್ ರವರು ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂವಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಇಬ್ಬರು ರೂವಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮುಂತೇರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಗಳು ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮುಂತೇರು ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮುಂತೇರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now direct to the trophy distribution. ನೇರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. Any guess for this highest scorer of orange cap owner? Any guess for the orange cap owner of this tournament?
Yes, it is. That is Prajwal. Please, Prajwal, come forward and collect your orange cap, the honorable guest, Mr. Ramakrishna, UFCA, and the cash prize sponsored by Rohan Montero. Mr. Prajwal, the highest scorer of this tournament, the orange cap owner. Please collect your orange cap and the cash prize. The cash prize donated by the Rahul Montero. The next one, the highest wicket taker. Any guess for the highest wicket taker in this tournament? The purple cap owner. No winning team, no losing team. Yes, it is. That is Manish from Nutan, Urwa. Any member of Nutan, Urwa, please collect the purple cap. Yes, Mr. Sandeep is there. The purple cap owner, that is Manish. Now it is Sandeep, yes. Sandeep collect the purple cap of this tournament of the Nutan Urwa, sponsored by Rahul Montero. And the next, that goes to the best catcher of this tournament. Any guess? There's so many catches of this tournament, but finally I decided the one catch. Any guess for the one catch, the best catch of this tournament? So many catches, but straightly going for the KFC side. That is Arshad. KFC taking a catch of the deep mid-off region. They take a very well catch. Any KFC member? Yes, Rohit, come forward. The collector best catch. As Mr. Ganesh, the honorable guest, the and or the only for the cash prize. The cash prize donated by Venu Mallikate. The next, the best fielder. The best fielder of this tournament. Any guess of the best fielder? That is also goes to Nutan Urwa side. Bhavit. The Bhavit is the man, Mr. Sandeep, collect your Nutan friends. Mr. Roland Bendo, sir, the honorable guest of this tournament. So now the man of the match, man who played in the finals. The three men in the race of the man of the match. Finally, the organizer decided to. The one man, he hit the reverse sweep six in the finals. That man goes to. Yes, beard man, that is Sajid. Sajid NM, collect your man of the match, the fine innings of the finals. Very good innings, collect by man of the match, and collect your man of the match, our honorable guest, Mr. Ganesh Kulala. Trophy and cash prize. The cash prize donated by the Rohan Montero. The every individual's best bowler, best batsman, man of the match, and man of the series. Cash donated by Mr. Rohan Montero. Now, best bowler. Any guess for the best bowler? So no guess. The same man, purple cap owner, that is Manish. The highest wicket taker in this tournament. I think 10 wickets. Now the direct for the best batsman. No guess for, no need for the best batsman. The orange cap owner also, Mr. Prajwal NFC. Please collect the best batsman of this tournament, Mr. Ramakrishna UFCA, and the
trophy and the cash prize for Mr. Prajwal. Now the big one. Now the big one, that is man of the series. Man who paired bat and ball. That is one man. Any guess for the man of the series? That side and this side. I think losing side. That is Ranjit. The Ranjit, the NFC Urwa. Please collect your man of the series. Ronald D'Souza, please collect the man of the series. And the cash prize donated by Mr. Rohan Montero. Ranjit, please stay there only. Now the man of the tournament. This is the one gifted for the sponsor by Olympic Sports. That is jersey. Mr. Ranjit collect a jersey for man of the tournament. Ronald D'Souza, please. Both are Ronald D'Souza and Roland Pinto, sir. Okay. Narjalla. T-shirt ವರಕೊಡ್ಲಿ ಬಕಾಯಿ ಪಾಡಡಿ. Now wearing the jersey for the man of the tournament. Now you, Ronald and Roland Pinto, sir, now shaken for that guy, the man of the tournament. Now call upon the sixth prize. The 1-6 for 600 and boundary for 500 and donated by Kenon D'Souza and Roshan Fernandez. Now Kuwait. Now the Prajwal. 1,600 rupees for your bucks. 2 boundaries and 1-6. And along with Mr. Ranjit, 1 boundary, and along with Mr. Ritesh NFC, 1 boundary. Please collect your Mr. Ritesh and Ranjit also. Mr. Rohan Montero. And over that cash prize of boundaries and sixes. Now the one man entered the sixth and the finals, that is Sajid. Sajid, collect your 600 rupees cash prize for Mr. Rohan Montero. Sajid. Thank you. Now the direct for Okay. The second, I mean,
the runner-up, even though they are the local teams, they are given very good fight to Mangalore. So we are very much proud of NFC Urwa. Even they are the main player. Sandeep was hospitalized. Good news is he's recovering fast, and he'll be okay by 2 days. So I request the captain and the vice captain, please come to the dais. Captain, please. Only captain is enough. Then we can take a group photograph. Are pardle. ಬರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇತು ಅದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಡಾರು ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪು A trophy sponsored by Pratham Espai. So I request Ramakrishna to hand over the runners trophy to Ranjit of NFC. Well played, team NFC. Ite portun leple. Ranjit, you can leple. Tundaraj. Team members, now please join Ranjit. And most of them are requesting Chandras also. He was a head coach for NFC. So please join. Begamalpuga. Late and already 110. Back ball. Trophy there pee kalya. Week into mare. Linus lundu undu. Momento. Molu. Korka. We were in a hurry for prize distribution. We forgot one gentleman's name who have done extremely well in the commentary field. Sorry, Linus. We forgot to give a memento to you. So, Linus, please come to the dais. It was already late, so we forgot to call up your name. So, I request Sridhar to give the memento to Linus. So, Nutan Champions Trophy in memorial of Austin Montero, my dad. The winners, NM Japu. So I request the captain first to please come over to the dais and collect your medal. Mujib, the winning captain. Nutan friends Urwa
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದಂತ ಸಂಜನಾ ಎಸ್ ಪೈ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ನಮಗೆ ಸಂಜನಾ ಎಸ್ ಪೈ, ಇವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದವರು NM ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮುಜೀಬ್ ಅವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರೋಫಿ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ನೋಡಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಣಲೇಪಿತವಾದಂಥ ಈ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದೊಂದಿಗೆ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು NM ಜಪ್ಪು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಮೀರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಬೀರ್ ಗುದ್ರೋಳಿ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಮೀರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ